कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare,
Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna बात के श्री चरणों में मेरा सादा दंड प्रणाम है। साथ ही में आप सभी भक्तों को भी सादा दंड प्रणाम है। तो आज जपा टॉक में कुछ विशेष हम चर्चा करेंगे और हमारे बीच हमारे एक वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक है साउथ अफ्रीका से श्रीमान कृष्ण बलदेव प्रभु। तो प्रभु जी का संक्षिप्त में आप सभी को परिचय देना चाहेंगे। श्रीमान कृष्ण बलदेव प्रभु साउथ अफ्रीका डरबन में रहते हैं और अभी फुल टाइम सेवा करे रिटायरमेंट के बाद लगभग 35 साल से ज्यादा यहाँ पर पुलिस में प्रभु जी ने अपनी सेवाएं निभाई और गुरु महाराज जी के आदेश अनुसार वे इस्कॉन के भक्तों की और विशेष रूप से यहाँ के हमारे गुरु भाई गुरु बहनों की केयरिंग, डिवोटी केयर, डिसाइपल केयर जिसे कहते हैं, उन सेवाओं में लगे हैं और उनका ज्ञान और उनकी धैर्यता के लिए प्रभु जी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि फेमस है। उन्हें भक्त जानते हैं पूरे साउथ अफ्रीका में। और कल हम जैसे आप सब जानते थे गुरु महाराज बोत्सवाना में थे, कल वहाँ रथ यात्रा इत्यादि कार्यक्रम करके हम पुनः साउथ अफ्रीका लौटे हैं और काफी लंबा प्रवास रहा। तो मैंने थोड़ा गुरु महाराज जी से आग्रह किया कि आप विश्राम लीजिए, सुबह का सेशन। गुरु महाराज जी काफी चिंता कर रहे थे, काफी चिंतित थे कि सेशन मुझे करना होगा ये वो। तो मैंने कहा नहीं, हम कर लेंगे, आप विश्राम कीजिए। तो आप सभी की जानकारी के लिए बस अब एक दिवस और है, एक दिन शेष है और परसों ट्रैवल करके वापस गुरु महाराज जी भारत लौट रहे हैं और फिर कुछ दिन रह के श्री वृंदावन धाम पहुंचेंगे, जहां आप सभी से आने वाली यात्रा या फिर आने वाले कार्तिक मास में पुनः भेंट होने की संभावना है या चांसेस है। तो गुरु महाराज कहे हैं कि आज हम गुरु महाराज जी का जो विदेश यात्रा रहा, 1 महीने से भी ज्यादा दिवस गुरु महाराज जी आप सभी से भी दूर थे व्यक्तिगत रूप से, और क्या कर रहे थे गुरु महाराज जी कह रहे थे कि लेट देम नो व्हाट आई वाज डूइंग हियर। गुरु महाराज कह रहे थे उन्हें बताइए, उन सबको अवगत कीजिए मैं क्या कर रहा था यहाँ पर। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, आज का जपा टॉक थोड़ा अलग रहेगा। हम कुछ जैसे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं या हमें सिखाए हैं, दो प्रकार के भागवत है, एक है व्यक्ति भागवत, एक है ग्रंथ भागवत। तो हम प्राय ग्रंथ भागवत की चर्चा करते हैं, लेकिन आज व्यक्ति भागवत हमारे परम आदरणीय परम वंदनीय प्रिय गुरु महाराज जी के थोड़ी सी चर्चा करेंगे और वो भी हम हमारे वरिष्ठ गुरु भाई से सुनेंगे या उनके सामने चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए प्रभु जी अंग्रेजी में बोलेंगे, मैं पूरा प्रयास करूंगा उसे सही तरह से उसका ट्रांसलेशन करने के लिए। आप सभी आशीर्वाद दीजिए। तो कृष्ण बलदेव प्रभु, वी वुड लाइक टू request your grace to begin today's Japa talk. So as
Krishna Keshav Prabhu said Guru Maharaj has instructed that we can even share the details or overview of his South African trip, or mainly book work and other limbs of his trip, like walks and meeting with Bhakti Chara Swami's disciples and what all he did. So you may please begin. I will try my best to serve you by translating, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. I thank you. I'm sorry, firstly, that I'm speaking in English. I hope and pray that, and I trust that you will be able to understand me. I know most of you are in Bharat, and English is not your first language. Unfortunately for us in South Africa, English is, and we've been brought up like that. So my Hindi is very limited, so I will be doing a post service by speaking in Hindi rather than speak in English. So I thank you all. I thank Guru Maharaj for allowing me the service. I thank Padmamali Prabhu for assisting me and for the introduction. So Prabhuji, I'll just finish that part, Prabhu. Sorry. प्रभुजी कह रहे हैं कि उन्हें काफी खेद हो रहा है, उन्हें दुख हो रहा है कि वे आप सभी की सेवा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका वे साउथ अफ्रीका से है और वहां पर हिंदी इतनी नहीं चलती और प्रभुजी की हिंदी इतनी कुछ खास नहीं है, तो अंग्रेजी में ही आप सभी की सेवा करने का प्रयास करेंगे। तो पुनः आप सभी से क्षमा मांग रहे और अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं गुरु महाराज जी के चरणों में कि उन्होंने गुरु महाराज जी ने उन्हें ये मौका दिया आप सभी से मिलने का और आप सभी की सेवा करने का। So the first time, this is Guru Maharaj's 12th visit to South Africa. So गुरु महाराज जी की ये साउथ अफ्रीका की 12वीं यात्रा है। गुरु महाराज जी इस बार को मिला के 12 बार साउथ अफ्रीका की यात्रा किए हैं। And for Guru Maharaj's past few visits, he has been concentrating on book work. पिछले कई यात्राओं में गुरु महाराज जी बुक वर्क या ग्रंथ लेखन का कार्य हमेशा ही किए हैं साउथ अफ्रीका में। And so this time was the longest that Guru Maharaj has spent in South Africa, and more specifically in Durban, which is 3 weeks. अब तक के सारी यात्राओं की गणना में इस बार गुरु महाराज जी सबसे ज्यादा रहे हैं साउथ अफ्रीका में, वो भी विशेष रूप से डरबन में। आप सभी को बताएं कि श्रील दीनबंधु प्रभु उन्होंने डरबन को एक विशेष नाम दिया है। वो कहते हैं ये डरबन नहीं है, ये दूरबन है। सो ब्रज के जो 12 बन है, तो वे कहते हैं ये 12 बनों के बाद ये 13वां बन है जो दूरबन है। डरबन का स्पेलिंग आप देखिए DURBAN, डरबन है। तो दीनबंधु प्रभु विनोद में कहते हैं ये डरबन नहीं, ये दूरबन है। Sorry, Prabhuji, for just adding that a bit. Sure, thank you. So Durban is considered the 13th forest, and Guru Maharaj looks at it also as the 13th forest. And his visit to Sri Sri Radha Radhanath Mandir, our temple in Durban, Guru Maharaj considers it to be out of this world, and he always says so on his visits to our temple. तो जब भी गुरु महाराज जी दूरबन या डरबन की यात्रा करते हैं, तो वहां के विग्रह जो है श्री श्री राधा राधानाथ, उनका दर्शन अवश्य करते हैं इस्कॉन डरबन मंदिर का। और गुरु महाराज जी ने एक विशेष वाक्य कहा है यहाँ के मंदिर के लिए, यहाँ के विग्रह के लिए। और गुरु महाराज जी ने कहा है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी इस संसार से परे है ये विग्रह या ये मंदिर, इतने सुंदर विग्रह है। और जब भी गुरु महाराज आते हैं अवश्य दर्शन लेते हैं उनका। So apart from Guru Maharaj visiting the temple, and he visited, this Sri Sri Radha Radhanath Mandir is south of the city, south of Durban. We have New Jagannath Puri in Phoenix, which is north of Durban, and Guru Maharaj visited there twice in this visit during his 3-week stay here in Durban. So ये 3 सप्ताह जो गुरु महाराज रहे, तो गुरु महाराज ने श्री राधा राधानाथ मंदिर के दर्शन लिए और साथ ही में दूसरा एक मंदिर भी है फिनिक्स,
जिसे न्यू जगन्नाथपुरी कहते हैं, यहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई के भव्य विग्रह हैं। तो गुरु महाराज जी ने वहां पर भी 2 बार गुरु महाराज जी ने दर्शन लिए, या गुरु महाराज जी मंदिर गए 2 बार। So apart from those, Guru Maharaj's main focus was book work. We all know the Lost Village video. So Guru Maharaj is writing a book on the Lost Village. That's not the title, though. They're still working on the title. But his 3-week visit to South Africa was mainly to focus on book work. तो इसके अलावा गुरु महाराज जी का मुख्य सेवा या कार्य डरबन में जब थे, साउथ अफ्रीका में रहे, वो बुक वर्क था। और ये बुक या ये ग्रंथ क्या है या किसके आधार पर लिखा जा रहा है या इसमें क्या है, वो अधिक जानकारी हमें दीनानुकंपा माता जी भी देंगे, जो आज हमारे बीच उपस्थित है, हमारा सौभाग्य है। सो दीनानुकंपा माता जी इस ग्रंथ में गुरु महाराज जी की का असिस्टेंस कर रहे हैं, गुरु महाराज जी को सहयोग दे रहे हैं, पूरी टीम लगी है। तो महाराज जी ये भी चाहते थे कि जब बुक की बात निकले तो माता जी कुछ हमें उसमें विस्तार से कुछ संक्षिप्त में उसकी जानकारी दे। So Prabhu ji, we would request Mataji to give us insights of the book, and again we will get back to you for getting more insights of Guru Maharaj's South Africa stay. So just be with us, Krishna Baldev Prabhu, and yeah, Mataji, over to you. Thank you, Padma Mali Prabhu. Hare Krishna, Krishna Baladev Prabhu. Hare Krishna, Padma Mali Prabhu. Hare Krishna, everyone. Humble obeisances, Jai Prabhupada. All right, it's been a real honor to be working with Gurudev. And just an update, Krishna Baladev Prabhu, the working title of the book currently is God Made the Country, What Did Man Do? So the purpose of the current working title, Padmamali Prabhu, you want to translate? Yeah, sure. So Mataji, हम आप सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए माता से इस भाव में उन्हें करने मिली। तो महाराज जी क्षमा कीजिए, माता जी कह रहे हैं कि महाराज जी ने अभी इस ग्रंथ का नाम कुछ अनोखा नाम रखा है अंग्रेजी में, या अंग्रेजी में ये ग्रंथ लिखा जा रहा है, और गुरु महाराज जी उसका नाम अभी ये कहे है कि भगवान ने तो ये जगत बनाया, गॉड मेड द कंट्री, व्हाट डिड मैन डू, लेकिन हम सब ने या मनुष्य ने क्या किया। काफी गहरा विचार है, काफी ऊंचा विचार है गुरु महाराज जी का। और गुरु महाराज जी ने आप लोगों को याद होगा कुछ जपा टॉक्स में आप सभी से इस विषय पे चर्चा भी किए थे कि हमने इस संसार की क्या हालत कर दी है, पॉल्यूशन कहिए या अनबैलेंस्ड इको सिस्टम कहिए इत्यादि। तो ये ग्रंथ का नाम है कि God made the country, what did man do? So this book is a lamentation by Srila Gurudev. And you may ask yourself, what is Gurudev lamenting about? तो विशेष रूप से इस ग्रंथ में गुरु महाराज अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो ये सुन के आप सोच सकते हैं, आप अपने आप से ही पूछ सकते हैं कि गुरु महाराज जी को किस बात का दुख है। It is a lamentation of loss on many levels. तो ये दुख जो है वो विशेष रूप से जो एक प्रकार से चीज तो नहीं कहेंगे, सही शब्द नहीं है, लेकिन जो एक प्रकार से खो गया है, उस खो जाने पे गुरु महाराज जी का विशेष शोक है। So I'm going to take you back just a little bit, and Krishna Baladev mentioned the Lost Village video. Now, I'm sure by now all of you must have seen the Lost Village video. That video was based on the initial draft of this manuscript. तो आप सभी को ज्ञात होगा, या ये आशा है कि आप सभी ने कहते हैं हमारी हिंदी भाषा में एक चलचित्र बना था जिसका नाम था लॉस्ट विलेज, जो आप सभी ने देखा होगा या अब तक आप सभी ने देख ही ली होगी। वो एक प्रकार से मूवी कहिए या छोटी डॉक्यूमेंट्री मूवी। तो आप सभी को जान के आश्चर्य भी होगा और प्रसन्नता भी होगी कि वो जो पूरा वो मूवी बनी थी, वो पूरी मूवी इस ग्रंथ के आधार पे बनी थी।
या इस ग्रंथ की जो गुरु महाराज जी के पास मैन्युस्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, उसके आधार पर वो मूवी बनी थी। So we have now gone through real trying times. Besides the pandemic, there's been climate change, global warming, pollution on many levels, mind pollution, air pollution, water pollution. तो एक प्रकार से अभी एक प्रकार से हम I'll just finish the sentence. Sure. Go ahead. And because of that, it is essential to start questioning what we are doing. तो जैसे आप सब जानते हैं, इस ग्रंथ में विशेष रूप से इस भाव पे चर्चा हो रही है कि पिछले कुछ समय से या सालों से ये पूरा मानव समाज पूरे पृथ्वी पे, केवल भारतीय की बात नहीं हो रही है, पूरे दुनिया में पूरा मानव समाज काफी मुश्किलों से गुजर रहा है, काफी कठिनाइयों से गुजर रहा है। जैसे आप सभी ने देखा ही या अनुभव भी किया है, कोविड पैंडेमिक आया, उसके अलावा से केवल पैंडेमिक नहीं, उसके अलावा काफी और दिक्कतें भी इस मानव समाज ने देखी। और विशेष रूप से उन दिक्कतों में है कि जो अलग अलग प्रकार के जो प्रदूषण है, जहाँ हवा प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, अन्न प्रदूषित है, और विशेष रूप से हर एक मानव का एक प्रकार से हम कह सकते हैं मन प्रदूषित है। तो ये सारे जो गहरे विचार है या बड़े बड़े चुनौती है, उस विषय में विशेष रूप से चर्चा हुई है इस ग्रंथ में। So it is time to evaluate the real meaning of simple living and high thinking, a society that Srila Prabhupada frequently emphasized in his teachings. तो अब ये समय आ चुका है, लगभग एक प्रकार से आधमका है, हम नहीं कह सकते आ चुका है, लेकिन आधमका है ये समय, जहां पर हमें न चाहते हुए भी इस वाक्य पे विचार करना होगा जो श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना के समय या इस्कॉन की स्थापना के पीछे श्रील प्रभुपाद का भाव रहा था, सादा जीवन उच्च विचार। Srila Prabhupada reminds us that Krishna's business was simple village life. He was a cowherd boy, herding cows, living happily in a village. श्रील प्रभुपाद चाहते हैं हम सभी इस बात पर विचार करें कि भगवान जिनकी हम सेवा करते हैं, कृष्ण, उनका जीवन काफी सरल था। वे एक गांव के लड़के की तरह अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और जहां केवल उनका एक ही कार्य है, वो है गैया चराना। The most appropriate setting for the world is a village, and we know this because not only do we have Gokul in this world, but we have Golok in Krishna's world. And Krishna came down and established Gokul to give us an example, an indication of the perfect village. तो श्रील प्रभुपाद ने ये इस पे भी जोर इसीलिए दिया क्योंकि ये नहीं है कि गोकुल जो वृंदावन मथुरा जो एक प्रकार से अभी भी गांव है, तो केवल वो यहाँ पर है, लेकिन भगवान वहां इसीलिए आए क्योंकि गोलोक वृंदावन जो भगवान का निज धाम है, वो भी एक गांव ही है और वहां पर भी एक सादा जीवन ही चलता है। तो भगवान एक प्रकार से बताना चाहते हैं कि जो विलेज लाइफ जिसे कहते हैं, गांव का जीवन जो है, वही वास्तविक या वही व्यवहारिक जीवन है या जीवन शैली है एक प्रकार से। So yeah, Gokul is in fact a template. It is a template on how to organize ourselves socially, economically, and environmentally in a manner that is most conducive to the overall well-being of humans, the successful practice of bhakti, yoga, and the health of the planet. भगवान एक रूप से बताना चाहते हैं गोलोक और गोकुल के माध्यम से कि जो ग्रामीण जीवन है या सादा जीवन है, वो एक प्रकार से सही या सबसे उच्च प्रकार का जीवन है किसी भी व्यक्ति के लिए। केवल भक्तों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, किसी भी व्यक्ति के लिए, जहाँ पर वो सादा जीवन जी के अपने संबंध, अपना व्यक्तिगत जीवन, अपने व्यवहारिक जीवन, अपना सामाजिक जीवन, सभी प्रकार के अपने संबंधों को भी वो उत्कृष्ट कर सकता है।
एक व्यक्ति एक साधारण मानव ग्रामीण जीवन जीकर। So now Gurudev is looking at the world and he realizes not only has Aravade, the village, Gurudev's village, lost the Vedic cultural practices, but the 5,000 villages in India, as well as the villages worldwide, they have slowly but surely been losing their traditional culture. तो गुरु महाराज जी ने जब ये विचार किया तब गुरु महाराज जी के ध्यान में आया या गुरु महाराज जी को ये विचार ने आकर्षित किया कि केवल उनका जो गांव, गुरु महाराज जी का जो जन्म स्थान है आरावड़े महाराष्ट्र में, जो जब गुरु महाराज जी का प्राकट्य हुआ तब जो एक पूर्ण रूप से गांव था, लेकिन आज वो अब गांव नहीं रहा है। वो गांव कहने के लिए हो सकता है, लेकिन वहां की जीवन शैली गांव ग्रामीण नहीं रही है। तो गुरु महाराज जी को ये विचार आया कि केवल मेरा गांव लुप्त नहीं हुआ है, अपितु भारत के 5,000 से ज्यादा गांव लुप्त हो चुके, और केवल भारत नहीं पूरे विश्व के असंख्य गांव लुप्त हो चुके हैं। इसीलिए इस ग्रंथ के टाइटल में या इस ग्रंथ पे जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसका नाम लॉस्ट विलेज था, यानी वो गांव जो खो चुका है। तो गुरु महाराज जी का ग्रंथ लेखन का ये एक केंद्र बिंदु है, एक प्रकार से आप ये मान सकते हैं। So if you think about it, the West was the first one to lose the culture, and as the West expanded and came to India then started losing her culture. So in fact, India is the greatest loser. तो अगर इसे हम एक प्रकार से देखें तो पाश्चात्य जगत जो है उन्होंने सबसे पहले अपना जो कहते हैं कल्चर खोया, या जो वैदिक कल्चर है वो उन्होंने पहले खोया, और उनके प्रभाव में आकर भारत भी अब अपना वो कल्चर खो रहा है। तो एक प्रकार से अगर विचार किया जाए तो वास्तविक नुकसान तो भारतीयों का है, भारत का है, क्योंकि वो अपना जो मूल कल्चर जिसे कहते हैं वो खो रहा है। So Gurudev has said in the book that we may be living in different geographical locations which are man-made, but understandably, universally, the whole world is a village. Everyone is a villager. And this is the concept of Vasudeva Kutumbakam. गुरु महाराज जी जब इस ग्रंथ का लेखन कर रहे थे या कर रहे हैं, तब गुरु महाराज जी का ये भाव रहा है कि ये दुनिया जो आज अलग अलग देशों में बट चुकी है, या ये पृथ्वी जो अलग अलग देशों में बट चुकी है, मानवों के द्वारा हमने ये कार्य किया है, लेकिन वास्तव में जो वसुदैव कुटुंबकम का भाव है, ये पूरी पृथ्वी एक ही गांव है। या जैसे गुरु महाराज जी, I'll just add a bit on this. जब गुरु महाराज यहाँ 2-3 बार अलग अलग स्थानों पर प्रवचन दिए, तो गुरु महाराज उसमें एक बात जरूर कहते थे कि जब भी भागवतम में आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सबको पता होगा कि युधिष्ठिर महाराज या इवन परीक्षित महाराज का वर्णन किया जाता है तो उनमें पृथ्वी पते कहा गया है। उनके लिए सुखदेव गोस्वामी ये शब्द का प्रयोग किए, पृथ्वी पते, जिसका सीधा अर्थ होता है कि वे केवल हस्तिनापुर के राजा सम्राट नहीं थे, अपितु पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। तो ये पूरी पृथ्वी जो है वो एक ही थी, एक ही राज्य था। ये तो केवल 5,000 वर्ष पहले की ही बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। तो खैर, जो माता जी कह रहे हैं, गुरु महाराज जी का यही भाव रहा है कि ये पूरा जो संसार है, ये पूरी पृथ्वी है, वो एक ही पृथ्वी है, या एक ही प्रकार से हम कह सकते हैं गांव है। और हम में से हम भले कहीं भी कोई भी रहे, चाहे कृष्ण बलदेव प्रभु डरबन में, साउथ अफ्रीका में हो, माता जी केप टाउन में हो, या अन्य भक्त भारत में अलग अलग स्थानों पर हो, लेकिन हम सब एक प्रकार से तो गांव वाले ही है। एटलीस्ट हमारा सबका भाव तो यही होना चाहिए, और ये हमें हमारे जीवन में इसे लाना भी है, उतारना भी है। सादा जीवन, उच्च विचार।
basically what it is. It's a sad story, and the world has become a bad and a mad world. And in order to change this, we have to change our consciousness. तो एक प्रकार से कहे ये संसार अंग्रेजी में थोड़ा अच्छे से सेट होता है, बोलने में मीनिंगफुल रहता है, मैड एंड बैड वर्ल्ड। तो ये एक प्रकार से आज का जो संसार है वो पागल हो चुका है एक प्रकार से। And we need to change our consciousness. और हम जिस भाव से इस समय में हम जी रहे हैं वो हमारी चेतना हमें परिवर्तित करनी अति आवश्यक है। So ultimately, I'm going to end off by saying that this book is going to be published after the world has been through quite a few calamities. And it lends itself to humanity to think about what they are doing, as the future doesn't remain bright if this is the way we are going to continue. तो सारांश में माता जी यही कहना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से आज के मनुष्य को अपनी चेतना या अपनी आदतें, अपनी विचार शैली बदलनी होगी, ताकि आने वाला भविष्य या आने वाले पीढ़ियों के लिए जो भविष्य हम अभी बना रहे हैं वो कोई अच्छा भविष्य हम नहीं बना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ब्राइट फ्यूचर नहीं है, ना केवल भारत का अपितु पूरे संसार का ब्राइट फ्यूचर नहीं है। तो इसे रोकने या इसे परिवर्तित करने एक प्रकार से गुरु महाराज जी पूरे विश्व को ये ग्रंथ प्रदान करने वाले हैं कि अब तक जो सहा है हम सभी ने, उसका एक प्रकार से गुरु महाराज जी सॉल्यूशन देने वाले हैं इस ग्रंथ के माध्यम से पूरे संसार को। I just want to say that all the facts and figures and information in the book is first-hand experience. And that first-hand experience has been when Gurudev has gone on Padayatra throughout the world, visiting, walking through the heart of Europe, the heart of the Americas, and seeing what is happening. And that was also an inspiration to make everyone aware that this book is not just for what we call in-house. In-house means ISKCON devotees. This book is for everyone. So, अंत में माता जी यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इस ग्रंथ में जो गुरु महाराज जी कहे हैं या लिखे हैं वो कोई कोरी कल्पना है या गुरु महाराज जी का विचार है। महत्वपूर्ण बात ये है कि इस ग्रंथ में जो भी लिखा है वो सभी बातें या वो हर एक भाव, हर एक विचार स्वयं हमारे गुरु महाराज जी का अनुभव है। और ये अनुभव गुरु महाराज जी ने कहाँ से प्राप्त किया? जो गुरु महाराज जी इतने साल पद यात्रा में पूरे विश्व में चले हैं, तो जब वे पद यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ही गहराई से इस संसार को देखा है, इसे ऑब्जर्व किया है, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, या चाहे कहीं भी कोई भी भाग हो इस पृथ्वी का। गुरु महाराज जी स्वयं वहां गए और वहां के लोगों को देखा है, वहां की जीवन शैली को देखा है, वहां की चेतना मानसिकता को देखा है, समझा है भली-भांति। और अब उसी के आधार पे गुरु महाराज जी इस ग्रंथ का लेखन कर रहे हैं, या ये ग्रंथ एक प्रकार से बन रहा है। I'll leave you with a final thought, which actually left all of us assisting Gurudev just thinking. Gurudev said that you have to move forward looking back. Now, if you just think about that, move forward looking back. In other words, you can only move forward if you look back and see what you have done, so you can improve and do better going forward. तो अंत में माता जी हम सभी से शेयर कर रहे हैं वो लास्ट विचार, जब गुरु महाराज जी निकले डरबन से बुक वर्क टीम के साथ बैठे थे, वो आखिरी विचार जिसने ये पूरी टीम को एक प्रकार से सोच में डाल दिया है। तो माता जी वो विचार, वो वाक्य हम सभी से भी शेयर कर रहे हैं। गुरु महाराज जी ने कहा है, आशा आप सब ध्यान से सुन रहे, काफी भक्त तेजी से लीव कर रहे हैं मीटिंग सोच के कि क्या कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन जैसे में हम हमेशा कहते हैं जो पीछे रहे हैं उनको
कृपा मिलती है। तो वो वाक्य गुरु महाराज जी का है कि हम सभी को, केवल ये बुक वर्क टीम को नहीं कहे, पूरे संसार को एक प्रकार से गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि हाँ, हमें आगे तो बढ़ना है, हमें आगे बढ़ते रहना है, आगे चलना है, लेकिन किस भाव से आगे चलना है? हमें पीछे मुड़ के देखना है कि हमने अब तक क्या किया है, और उस भावना को या उस विचार को मन में रख के हमें आगे चलना है। व्यक्तिगत रूप से सोचने जाए तो हमें आगे चलना है, तो हमें तो आगे देखना होगा ना, लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं हमें पीछे देख के विचार करते हुए आगे चलना है। बहुत ही गहरा विचार है ये। सो बहुत बहुत धन्यवाद दीनानुकंपा माता जी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर sharing the quick insights of this book and creating a buzz to each and every listener participant of this session to quickly grab at least a copy of this book and read and assimilate the thoughts, teachings and the divinity of this book in their personal lives. Thank you so very much. पुनः हम माता जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये कोई रेगुलर समय नहीं है, जैसे आप सब जानते हैं, यहाँ 3-3:15 बजे है, तो और कल रात में लगभग 9-9:30 बजे समाचार पहुंचाया गया माता जी के पास, कल सुबह को उपस्थित रहना है। तो माता जी का आभार व्यक्त करते हुए अब हम पुनः कृष्ण बलदेव प्रभु के पास पहुंचेंगे, जो काफी धैर्य, प्रभु जी अपने धैर्य के लिए फेमस है। वैसे पूरे साउथ अफ्रीका में सभी लोग उन्हें जानते हैं अपनी धैर्यता के लिए, धीरता के लिए। तो thank you so much Krishna Baldev Prabhu for waiting for us so patiently. And I was just telling them you are known for your gravity and patience. So yes Prabhu, we are back to you. So you may please take us ahead in the journey of Guru Maharaj's South African trip. Thank you again Mataji for that insight. Up to Krishna Baldev Prabhu. Thank you Prabhu. Thank you Dinanukampa Mataji for bringing in the introduction of the book. It's that was Guru Maharaj's purpose for visiting South Africa, and he's Guru Maharaj. You know, in Bhagavad Gita, Prabhupada says in one purport, he says that Krishna consciousness must be executed with military discipline. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के एक भावार्थ में ये वाक्य लिखे हैं कि हमें भक्ति किस भाव से करनी है। तो हमें भक्ति जिस तरह से सेना, आर्मी या मिलिट्री में जितना डिसिप्लिन होता है, उतने शिष्टाचार से हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। So similarly, I know Prabhu in his introduction mentioned about my work a little bit, but in with military discipline, everything has to be done at a certain time and in a particular fashion. तो हम सब जैसे जानते हैं कि सेना का जो शिष्टाचार होता है वो बहुत ही कड़ा होता है, जहाँ पर हर एक कार्य या हर एक बात को सही समय पे सही प्रकार से किया जाता है। And if we want to know how Prabhupada lived his life, all we need to learn or to see is how Guru Maharaj lives his life, because Guru Maharaj lives exactly as Prabhupada lived while he was in his physical manifestation on this planet. प्रभु जी अपना साक्षात्कार कह रहे हैं कि यदि हमें श्रील प्रभुपाद को समझना है या श्रील प्रभुपाद के विषय में अधिक जानना है, या किस प्रकार के थे प्रभुपाद या कैसे थे श्रील प्रभुपाद, तो ये प्रश्न जानने के लिए हमारी पीढ़ी को केवल एक कार्य करना, और वो है हमें श्रील गुरु महाराज को जानना है, श्रील गुरु महाराज को देखना है, क्योंकि गुरु महाराज वही करते हैं जो श्रील प्रभुपाद किए हैं, या गुरु महाराज एक प्रकार से अपना पूरा जीवन इसी शैली में जी रहे हैं जो श्रील प्रभुपाद सिखाए या जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद रहे। So Prabhupada once said that he can get us into Golok Vrindavan through the back door. All we need to do is hold on to your dhoti. So similarly, with Guru Maharaj living and walking and breathing Srila Prabhupada and everything that Prabhupada does, we hold on to Guru Maharaj's dhoti, because Guru Maharaj is so much Prabhupada conscious and Krishna conscious that we hold on to Guru Maharaj, and that's our passage back to Golok Vrindavan. तो जैसे श्रील प्रभुपाद कहे हैं, काफी ये फेमस बात है, श्रील प्रभुपाद कहे कि
मैं आप सभी को, इस्कॉन के हर एक भक्त को गोलोक वृंदावन ले जाऊंगा, लेकिन कहाँ से? पीछे के दरवाजे से। तो श्रील प्रभुपाद के पास ये चाबी है गोलोक के पीछे के दरवाजे की, लेकिन श्रील प्रभुपाद कहे कि इसके लिए आप सभी को या हम सभी को केवल एक कार्य करना है, वो है श्रील प्रभुपाद की धोती पकड़े रखना है। ऐसा श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को कहे। तो उसी भाव में हम सभी को गुरु महाराज जी की धोती पकड़ के रखनी है बस, क्योंकि श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज जी को ले जाएंगे और गुरु महाराज हम सभी को ले जाएंगे गोलोक वृंदावन, क्योंकि गुरु महाराज स्वयं व्यक्तिगत रूप से 24 घंटा वे, वो भले कुछ भी कहे, अंग्रेजी में कहते ही फील्स ही ब्रीथ्स श्रील प्रभुपाद। तो गुरु महाराज एक प्रकार से केवल श्रील प्रभुपाद के ही स्मरण और सेवा में कार्यरत रहते हैं, यहाँ तक कि उनका जो श्वास उच्छ्वास है वो भी श्रील प्रभुपाद की सेवा में लगा है। So Guru Maharaj practices his Krishna consciousness in true military discipline, where everything is done specifically at a certain time. And devotees that travel with Guru Maharaj, like with Padmamali Prabhu and with Raman Krishna Prabhu, will bear testimony to this, that Guru Maharaj is very, very strict when it comes to times and the practice of his Krishna consciousness, even with his morning japa walks. तो गुरु प्रभु जी कह रहे हैं कि इसी भाव से जब प्रभुपाद जी का वो तात्पर्य उन्हें याद आ रहा है, जहाँ पर वे लिखे हैं कि भक्ति में भी हमें मिलिट्री या सेना के शिष्टाचार या डिसिप्लिन से हमें हमारी आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो प्रभु जी कह रहे हैं उन्होंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, उनके अनुभव और साक्षात्कार रहे हैं कि किस प्रकार से गुरु महाराज कितने समय शिष्ट है या टाइम डिसिप्लिन है, और हर एक कार्य, हर एक सेवा वो बहुत ही सुचारू ढंग से सही समय पे सही प्रकार से सही भाव से करते हैं, और काफी स्ट्रिक्ट है गुरु महाराज समय को लेकर, और भले ही वो मॉर्निंग वॉक ही क्यों ना हो। So like that, in the morning walks, we used to take Guru Maharaj to a park or to the beach front. Durban beach front has got like a paved area where people walk, and it's generally in the mornings you'll find people keeping fit by walking or running or cycling along the beach front. So we should take Guru Maharaj on this walk on the beach and in the parks as well. So गुरु महाराज जी जितने दिन यहाँ पर थे, प्रत्येक दिवस, जितने दिन साउथ अफ्रीका में थे और मॉरिशस के भी भक्त हैं यहाँ पर, तो जितने भी दिन गुरु महाराज भारत से बाहर थे, तो गुरु महाराज जी प्रत्येक दिवस सुबह जपा सेशन करने के बाद 6:30 पौने 7 के आसपास मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। So this idea that Dinano Kampamataji was talking about in the book about the Vasudevam Kutumbakam, I will talk about this one morning walk on the beach. तो प्रभु जी कह रहे, जो माता जी ने कहा गुरु महाराज जी का जो भाव था वसुदेव कुटुंबकम इस ग्रंथ के लेखन में, तो प्रभु जी कह रहे उसी संदर्भ में प्रभु जी जो आप अभी देख रहे हैं वीडियो, इसी दिन की कुछ चर्चा प्रभु जी हम सभी से करने वाले हैं। Go ahead. And we all know that all the rivers lead into the ocean. So similarly, all the rivers in Bharat leads into the ocean. And the ocean South Africa shares with Bharat is the Indian Ocean. तो जब इस वॉक पे हम गए थे, तो जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, इसी विषय पे कुछ चर्चा करने वाले हैं प्रभु जी। आपको पहले ये चित्र दिखाए जा रहे हैं ताकि जब प्रभु जी कुछ बोलेंगे तो आप समझ पाए। ये आप देख रहे हैं कृष्ण बलदेव प्रभु वहाँ के लोकल व्यक्ति से पूछ रहे हैं ये क्या हो रहा है। Yes, and it's so I'll exactly just phrase it a bit. Sorry प्रभु जी, but I was doing that screen sharing thing. तो जैसे आप सभी ने देखा, हम एक सुबह वहाँ के बीच पर, काफी फेमस बीच है, तो वहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, जैसे आपने वीडियो में देखा। कृष्ण बलदेव प्रभु हमें लेकर गए थे। तो वहां पर समुद्र में अगर हम ये आई एम जस्ट एडिंग अ बिट प्रभु, अ बिट ऑफ माय रियलाइजेशन एज वेल। तो जब हम वहां गए थे तो
हम ये सोचते हैं, समुद्र देखते हैं, समुद्र की सुंदरता देखते हैं, वहां के लोगों को देखते हैं, वे क्या कर रहे हैं, वो सब हमारी नजर प्राय उसी पर जाती है। लेकिन जब मैं गुरु महाराज जी के बगल में चल रहा था, जब गुरु महाराज जी कुछ कहे मुझे, तब एक प्रकार से मुझे, कैसे हम कहते हैं, झटका ही लग गया कि गुरु महाराज जी भी तो यहीं चल रहे हैं, लेकिन उनका उनका मन कहाँ पर है, उनकी चेतना कहाँ पर है, उनके विचार कहाँ पर है। जब गुरु महाराज जी कहे तो एक प्रकार से मुझे झटका लगा। तो गुरु महाराज जी जब करते करते मुझे देख के कहे कि ये दिस इज इंडियन ओशन। गुरु महाराज जी कहे ये इंडियन ओशन है। और फिर गुरु महाराज जी कहे, जो कृष्ण बलदेव प्रभु भी कहे, कि पूरे भारत की जितनी भी नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, जो सप्त नदियों का हम श्लोक बोलते हैं, वो सारी नदियां आके इस समुद्र में मिलती है। और ये समुद्र यहाँ साउथ अफ्रीका में बह रहा है। और फिर जैसे आपने चित्र देखे, आई थिंक प्रभु यू आर गोइंग टू एड्रेस द सेम पॉइंट। तो मैं Yes. ये सोच रहा था कि मैं तो ये समुद्र देख रहा हूँ या यहाँ के शहर को देख रहा हूँ, लेकिन गुरु महाराज जी की चेतना क्या है। गुरु महाराज जी इसमें भी जमुना का और गंगा का दर्शन कर रहे हैं। और फिर गुरु महाराज जी जो कहे वो मैं नहीं कहूंगा, मैं चाहता हूँ कृष्ण बलदेव प्रभु कहे। यस प्रभु। Yeah, so as Prabhu is saying, those same rivers flow into the ocean, and those same rivers, the waters of those rivers reaches the shores of Durban, and the local people, the Africans, collect that water with sea sand. You would have seen in the picture or in the video, they were small, they were bottles standing on the sand, and in those bottles are those bottles are filled with seawater that the African people take back to the villages, back to the farms, which the one person I was speaking to, the Guru Maharaj, you saw the back of Guru Maharaj. He came from a town that's 250 kilometers away. This picture, this town is 250 kilometers away from the ocean. And that man came to collect the water. These people, these Zionist people from the Zion church, came from Ladysmith, and Ladysmith is a town 250 kilometers away. And they came to collect this water, to drive back 250 kilometers, to cleanse their village, to cleanse their homestead, their yards, and their houses with the waters from the holy rivers of Bharat that flows into the Indian Ocean. तो आप जो चित्र में देख रहे हैं, फिर गुरु महाराज मुझे वो बताने के बाद गुरु महाराज ये कहे, तो यहाँ ये देख रहे हो, यहाँ के लोग ये क्या कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से हमने ये देखा कि लोग आचमन पहले कर रहे थे, फिर प्रणाम भी कर रहे थे, कुछ लोग पूरा ऐसे लेट जाते थे और फिर समुद्र में स्नान करते थे। तो गुरु महाराज जी, और ये चित्र में जो आप देख रहे हैं, प्रभु जी कहे, ये 250 किलोमीटर दूर एक गांव है वहां साउथ डरबन में, वहां से ये लोग आए हैं। और वे लोग आके इस प्रकार से, एक चर्च से आप देख सकते हैं, सबका एक समान सबकी पोशाक है, सारी माताएं हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ऐसे बॉटल्स में पानी भर के ले जाते हैं इस समुद्र का, और इस पानी का छिड़काव वे अपने पूरे गांव में, घरों में अपने आप पे करेंगे। और उनका ये भाव है, इस वीडियो में वही बातचीत हो रही है, तो उनका ये भाव है कि इस पानी के छिड़काव से उनका घर और वे पवित्र हो जाएंगे। और आप इस वीडियो में जो देख रहे हैं, तो जब ये बात हो रही थी, ये सुन रहा था मैं, तब सहसा एक पानी की लहर आई और आप देख रहे हैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों को स्पर्श किया। तो मैं ये देख रहा था कि या मेरा एक अनुभव है, आई एम जस्ट एडिंग दैट अ बिट प्रभु, again, that when we were talking about this, how auspicious this water is, and at the same moment that tiny wave came and it practically touched lotus feet of our dear Guru Maharaj. Yes, yes, yes. Could I just add? Please, it's a yeah, please add, Mataji. I wanted to also say, you're talking about Gurudev's mood, but when Gurudev came back to the house where we were staying and we had our book session, he brought this incident up with us, and he said, can you see, this is what I'm talking about, the culture that is lost. There are hints of this culture that are still around in this village. And this is what Gurudev is talking about when he talks about the Vasudeva Kutumbakam, where he's saying that the culture worldwide is being lost, but the hints of culture are still there. Doesn't matter where you are, whether in India or you're outside India.
So that I just wanted to attach it to this incident because Gurudev came back and explained in detail the entire experience. माता जी कह रहे हैं, मैं वो पॉइंट आप सभी से शेयर कर रहे थे। मेरा भी एक साक्षात्कार रहा, एक अनुभव रहा कि जब हम ये बात कर रहे थे तो, और ये लगभग हम 20-25 मिनट चले, उसके बाद ये हुआ कि जैसे गुरु महाराज उस समुद्र के एक प्रकार से वो तीर्थ बन चुका है, क्योंकि महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी समुद्र में स्नान किए और हरिदास ठाकुर को स्नान करवा के घोषित किए कि अब ये समुद्र नहीं रहा, ये तीर्थ जल हो गया और हर एक व्यक्ति को इसमें स्नान करना चाहिए। तो उसी प्रकार से जब गुरु महाराज जी उस तीर्थ का वर्णन कर रहे थे अपनी चेतना में, तो सहसा एक लहर आके गुरु महाराज जी के श्री चरणों को का धोवन किया। तो तभी वो भजन भी याद आया, उठे उठे जमुना उठोले से चरण धोआए, ढूले ढूले गौराचरण में जो गुरु महाराज जी गाते हैं। तो माता जी ये कह रहे हैं कि उस वॉक से जब हम वापस लौटे और गुरु महाराज जी इनके साथ बुक वर्क टीम के साथ चर्चा करे, तो गुरु महाराज जी इस पूरे एपिसोड को काफी विस्तार से बताया कि गुरु महाराज जी कहे आज सुबह भी हमने ये देखा या हमने ये ऑब्जर्व किया कि किस प्रकार से भले बड़े बड़े गांव नष्ट हो चुके हैं या लोग शहरीकरण की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं ये मानसिकता, ये चेतना बची है या छुपी हुई है, जहां पर लोग 250 किलोमीटर दूर से आकर भी इस समुद्र का जल तीर्थ के रूप में ले जाते हैं और अपने घरों को या अपने आप को पवित्र करने के लिए। तो गुरु महाराज जी काफी प्रभावित थे या उनको आनंद एक प्रकार से व्यक्त कर रहे थे कि अभी भी भले वो भारत हो या कोई भी और स्थान हो, लेकिन ये कल्चर जिसे कहते हैं वो अभी भी बचा हुआ है। यस प्रभु। Yeah, so in that one morning, Guru Maharaj even pointed out there was a woman who was offering some prayers to the ocean, and at one point she even prostrated herself on the sand facing the ocean. So Guru Maharaj says, see, she's even doing Dandavat Pranam for the ocean as well. So I told Guru Maharaj, it was also like that when we were children and we used to go to the beach. Then our grandmother, our Dadima used to make us stop. We could not enter the water before they used to go and offer some prayers to the ocean, and only after that were we allowed then to go into the water. So this prayer attitude, the prayer approach is present in us as Indian people, as people of Indian descent, even though we're living outside India. We are fourth generation outside India. But some threads of this Indian culture is still with us. And we take it beyond the Indian person as well. It was quite clear and evident for an African woman to be doing the same, offering her respects to the ocean before they could go into the water. So it's in keeping with what Dinanukampa Mataji is saying and what Guru Maharaj is talking about in his book, about this lost village culture, the lost culture of the world. प्रभु। तो जब हम ये हुआ, फिर हम थोड़ा और आगे चले तो वहां एक और दृश्य देखने मिला। एक महिला व्यक्तिगत रूप से समुद्र की लहरों के यानी कोने पर खड़े रहकर कुछ प्रार्थनाएं कर रही थी, और कुछ प्रार्थना करने के पश्चात उन्होंने एक प्रकार से पूरा दंडवत प्रणाम किया इस समुद्र को, और उसके बाद अंदर स्नान करने या अंदर गई, प्रवेश किए। तो गुरु महाराज कह रहे थे कि देखो अभी भी ये कल्चर जीवित है। और प्रभु जी फिर कह रहे हैं कि किस प्रकार से भले ही अफ्रीका हो, लेकिन वहां पर भी जब प्रभु जी छोटे थे तो उनकी दादी माँ उन्हें ये सिखाती थी कि पहले जाके प्रणाम करना है, समुद्र के देवता को कुछ प्रार्थना करनी है और फिर उसमें जाना है। तो भले ही पिछले 4-5 पीढ़ी से प्रभु जी अफ्रीका में स्थित है, लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं कि भारत का जो कल्चर है वो हम में अभी तक बचा हुआ है या छुपा हुआ है या जीवित है। तो इस पॉइंट पे आई जस्ट ऐड अ बिट प्रभु। तो जब हम यहाँ से निकले थे, भारत से निकले थे और गए, पहले तो सबसे पहले ये एक मेरा भी साक्षात्कार मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ कि हम हमेशा सुने हैं, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों में हम सुने हैं या शास्त्रों से सुने हैं कि आज भी हमने इसका उल्लेख किया, वर्णन किया कि पृथ्वी एक ही है। अभी तो अलग अलग देश
मानव ने बनाए हैं, ये यहाँ पर देश है, ये हमारा देश है। वास्तविकता में देखनी जाए तो ये पृथ्वी पूरी एक है। तो और भारत उसका नाम है। तो मैं ये सोच रहा था कि ये थोड़ी अतिशयोक्ति है, थोड़ा सा मेरा अपराध का भी भाव रहता था कि यार ऐसे नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होगा। लेकिन जब हम गए मॉरिशस में, पहली बार मैंने ये सुना कि मॉरिशस, एक समय था जब मॉरिशस में कोई नहीं रहता था, केवल कुछ पक्षी थे, और वहां पर अलग अलग समुदाय के लोग आए, कुछ मुगल आए, कुछ ये आए, वो आए, और वो आके बसे। तो अभी मॉरिशस में आप जाएंगे तो वहां पर आपको सुन के आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी में बात नहीं होती, विशेष रूप से वहां भोजपुरी भाषा चलती है। बिहार उत्तर प्रदेश की जो भोजपुरी भाषा है वो बोली जाती है। केवल मॉरिशस में नहीं, आप अमेरिका साइड चले जाए, सदर्न अमेरिका, सूरीनाम, गयाना में, वहां पर भी भोजपुरी चलती है। अब वहां से हम अफ्रीका आए तो वहां पर मैं थोड़ा कन्विंस हुआ कि सही बात है, हमारे भारत के लोग ही एक प्रकार से पूरे विश्व में फैले हुए। जब हम साउथ अफ्रीका पहुंचे तो वहां पर भी इतने सारे इंडियन फेसेस देखे, और वहां की हिस्ट्री, वहां का जब भूतकाल हमने जानने का प्रयास किया तो वहां भी पता चला कि भारत के ही लोगों को यहाँ लाया गया है कई वर्षों पूर्व, लेकिन उन्होंने ही एक प्रकार से इस देश को भी रहना, या इस देश में रहना प्रारंभ किया, और आज भी वहां पर है। तो इस पॉइंट से बहुत ज्यादा कन्विक्शन एक प्राप्त हुआ कि वास्तव में ये पूरा जो जो ये पृथ्वी थी वो भारत ही थी एक समय, और वहां पर अधिक रूपतर जितने भी लोग थे भारतीय थे। और आज आप कहीं भी चले जाए तो वहां के हिस्ट्री में भारत, या भारत का कल्चर, या भारत के लोग जुड़े हुए हैं, और बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं, जो आज भी अपने कल्चर का पालन कर रहे हैं। यस प्रभु। So even even with the walks in the park, or even driving Guru Maharaj, this the thoughts of his book, everything he sees brings him back to his book, brings him back to his concerns about us losing our culture. As soon as we lose the village concept of life, we are losing our culture. And as soon as we lose our culture, we are losing the village concept of life. As soon as we lose our culture, we are losing the simple way of life. We might before translating, I'll just request devotees. काफी वक्त मीटिंग लीव कर रहे हैं, हम जानते हैं समय हो चुका है, आप सबके ऑफिस और कार्य का समय हो चुका हो, लेकिन आप सभी से थोड़ा अनुरोध करना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि आज ये जो जपा टॉक में चर्चा हो रही है, शायद भविष्य में आपको कभी सुनने ना मिले। ये शायद यूट्यूब पे भी लाइव अभी नहीं हो रहा है। तो जितने भक्त अभी हैं उनसे प्रार्थना है कि वे बने रहे, क्योंकि गुरु महाराज जी, ऐसा मैंने तो ये पहली बार देखा जहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि बताइए मैंने क्या किया यहाँ पर। तो एक प्रकार से हम गुरु महाराज जी की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, उसका अमृत पान कर रहे हैं, जो बहुत ही रेयर है, हमें ये चांस नहीं मिलता है। तो जो भक्त है उन सभी से अनुरोध है कि आप बने रहिए, सो दैट आपको भी ये अनुभव, ये साक्षात्कार प्राप्त हो पाए जो गुरु महाराज जी हम सभी से शेयर कर रहे हैं। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि चाहे वो सुबह की मॉर्निंग वॉक हो या दिन का कोई भी कार्य हो, गुरु महाराज जी इवन गाड़ी में वापस आते वक्त, कभी कभी ऐसा होता था गाड़ी से एक स्थान पे जा रहे हैं और फिर वॉक कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, तो किसी भी अवस्था में गुरु महाराज जी के मन में, मानसिकता में ये चिंता, जिस चिंता की माता जी ने बात की, या शोक, चिंता तो नहीं, माता जी ने कहा कि गुरु महाराज लैमेंटेशन, शोक है एक प्रकार से गुरु महाराज जी को कि क्या हो रहा है अभी इस संसार में। तो गुरु महाराज जी हमेशा अपने उस शोक में स्थित रहते थे, उस भाव से विचलित कभी भी नहीं हुए, चाहे वो गाड़ी चला रहे, गाड़ी से आ रहे हो, चाहे चल रहे हो। और मॉरिशस में तो गुरु महाराज ये भी कहे कि जो उनकी मॉर्निंग वॉक थी सुबह, मॉरिशस में गुरु महाराज मॉर्निंग वॉक लेते थे, तो गुरु महाराज कहते थे वॉक हम ऐसे मॉरिशस का आनंद लेने नहीं आए, क्योंकि मॉरिशस बहुत ही सुंदर जगह है। तो गुरु महाराज ये कहते थे कि वी आर नॉट एंजॉइंग दिस ब्यूटी ऑफ मॉरिशस, दिस मॉर्निंग वॉक इज अ पार्ट ऑफ अवर रिसर्च फॉर द अपकमिंग बुक। तो गुरु महाराज जी कहते थे कि, या कहे कि हम जो ग्रंथ लेखन कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा रिसर्च लगता है, काफी रिसर्च लगता है, तो वहां रिसर्च करने हम बुक ये मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो एक प्रकार से आप समझने का प्रयास कीजिए, अपने आप को उस भाव से, उस विचार से जोड़ने का प्रयास कीजिए कि कितने गहराई तक। और प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया आज के, गुरु महाराज जी अपना आध्यात्मिक जीवन मिलिट्री डिसिप्लिन से चलते हैं। अव्यर्थ कालत्वम जो एक पॉइंट है शुद्ध भक्तों के गुणों में, एक मिनट या एक क्षण भी व्यय नहीं करते गुरु महाराज। तो यस प्रभु।
Yeah, so more. you know, I'm feeling I greedy. I want to hear more. I don't know about others, but please keep saying. no, you've been with us on some morning walk, so you understand. And you're traveling so much with Guru Maharaj too, so you understand his mood and his consciousness and his intentions and his goal and such. So even you know this grass that they use to make roofs, thatch roofs. Uh, that's also done in African in on the African houses where they bind the grass tightly together so much so that it waterproofs the roof. And Guru Maharaj, even one morning, he saw thatch. He saw a notice board on on a pole. It says thatch. That's it, same one. It says thatch, a name and a phone number. And Guru Maharaj asked me, thatch? I says, yes, Guru Maharaj. It's where they use that grass to make the roofs. And then as soon as I mentioned that, I realized Guru Maharaj, when he asked thatch, he made a connection with that sign to a village house roof. And then I told him, I said, Guru Maharaj, once again, you are seeing that Indian culture is present throughout this planet. That even here, the African people are hired by the rich people to make a thatch roof on their house. So they will build a house with brick and cement, and they will have all the modern, it will be a modern house, but the roof will be a thatch grass roof. And Guru Maharaj saw that connection. तो जो चित्र आपने देखा, तो उस चित्र में एक जगह पर वॉक करते समय गुरु महाराज जी को, जैसे हम हमारी भाषा में कहते हैं झोपड़ी, तो एक प्रकार से घास से बनी, सूखे घास से बनी हुई झोपड़ी दिखी, तो गुरु महाराज सहसा रुक गए। और वहां पर लिखा था कि अगर आपको ऐसी झोपड़ियां बनवानी है तो इस नंबर पे संपर्क करें। तो गुरु महाराज जी ने उसे देखा और गुरु महाराज जी स्मित हास्य किए, जैसे हमारे शर्मा प्रभु और माता जी अभी हास्य व्यक्त कर रहे, तो गुरु महाराज जी भी हंसे हंसे, और गुरु महाराज जी ने कृष्ण बलदेव प्रभु को देखा और कहा कि, और फिर प्रभु जी कहे कि हाँ गुरु महाराज जी, ये फोन नंबर दिया है और लिखा है कि अगर किसी को ऐसी झोपड़ी बनवानी है, क्योंकि प्राय देखिए क्या चल रहा है संसार में, अमीर लोग जो है, जो धनाढ्य लोग हैं, वे अफ्रीका के गरीब जो आदिवासी लोग हैं, उन्हें पैसा देकर अपने घर पे बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये झोपड़ियां बना के दीजिए हमें। तो देखिए क्या क्या हो रहा है, जिसके पास, जो बेचारा झोपड़ी में रह रहा है, वो महल का सपना देख रहा है, जो महल में रह रहा है वो झोपड़ी वालों को बुला के झोपड़ी बनवा रहा है अपने घर पे, ताकि एक अच्छा एक दृश्य बन सके। तो गुरु महाराज जी इस पर भी विचार किया और गुरु महाराज जी पुनः इस ग्रंथ के साथ इस भाव को जोड़े कि किस प्रकार अभी भी लोगों में ग्रामीण जीवन कहीं ना कहीं जीवित है। Yes, bro. Yeah, so, I was even telling Guru Maharaj once that when we were children, we used to get cow dung and we used to smear in the yard, cow dung. And the entire yard was covered with cow dung. And then Guru Maharaj asked me, was it cow dung or horse dung? I said, no, Guru Maharaj, it was cow dung we used to get, that my daddy used to get from someone used to bring from their farm. And he just stayed quiet and contemplated on that. And then I went on further to tell him that, we noticed that after our first trip to Bharat, that we outside Bharat, we might think that we are making advancement, yet in fact we are going backwards. And we might have a lot of Western things available to us, but we have lost our culture. And generation by generation, we are losing it more and more. And I think Guru Maharaj is very, very concerned about that it's being lost very, very quickly. And he's wanting to try to re-establish that lost culture. तो प्रभु जी एक दिन मॉर्निंग वॉक में गुरु महाराज जी से कुछ बात कर रहे थे, गुरु महाराज जी से कह रहे थे कि किस प्रकार से जब वे छोटे थे तब वे अपने घर को गाय के गोबर से पुताई करते थे, गाय के गोबर से उसकी लिपाई होती थी। तो गुरु महाराज जी विनोद व्यक्त करते हुए कहे कि पक्का गाय का गोबर था या घोड़े का था या किसी और का था, क्योंकि विदेशों में तो गाय प्राय मिलती है। तो प्रभु जी कहे नहीं नहीं गुरु महाराज, हमारी दादी माँ हमें गाय का ही गोबर ला के देते थे
और हम उसकी लिपाई पुताई करते थे घर में और उससे घर बनाते थे। तो गुरु महाराज जी कहे कि एक प्रकार से ये पूरा जो जो कल्चर है, ये देखिए आज हमें लगता है वृंदावन में ये होता है सिर्फ। प्रभु जी कह रहे हैं कि अफ्रीका हो या चाहे कहीं भी कोई भी अन्य शहर या देश हो इस पृथ्वी का। वैसे आप सभी की जानकारी के लिए कृष्ण बलदेव प्रभु भी अपने कार्य में, जब उन्होंने अपने भौतिक जीवन में जो कार्य में लगे थे उसमें भी उन्होंने काफी ट्रैवल किया है, तो वो भी काफी एक अनुभवी व्यक्ति है। तो वे भी कह रहे हो, गुरु महाराज जी भी कह रहे हैं कि पूरे पूरे पृथ्वी पे ये जो ग्रामीण जीवन है या सादा जीवन है, वो भाव और वो चेतना बहुत ही तेजी से लुप्त हो रही है एक प्रकार से। और ये हम सभी की जिम्मेदारी है या कार्य है इसे बचा के रखना या इसे इसे इंटैक्ट रखना। सो समय हो रहा है, वी आर गेटिंग अ बिट late with the time, Prabhu, so we can conclude in under maybe maximum 5 minutes. You can share some more insights about his stay apart from this book and walk and other things. Yeah, to learn how to be Krishna conscious is to study Guru Maharaj. In everything Guru Maharaj sees or speaks or does is Krishna conscious. In our morning Japa walks, he will talk about Krishna. The one morning, he described Krishna from head to toe. And he went into the numbers. There are 3 things of Krishna that's deep. They are his limbs, his 2 arms are so long, and he really went into detail describing Krishna. Krishna's hair, Krishna's eyes, his lotus lips, his lotus navel, his lotus face. And we were just consumed. We were so far away from Vrindavan. We were in a suburb of Durban, yet Guru Maharaj has Krishna with him wherever he goes. And then we learn, right, that wherever Krishna is, that is Vrindavan. And we know that when the spiritual master descends, the entire spiritual world comes with him, right? So when Guru Maharaj comes, the entire spiritual world comes with him. So as Guru Maharaj left here and he goes to somewhere else, as Guru Maharaj left Mauritius and he came to Durban, when he came to Durban, the entire spiritual world descended. The sad part is when Guru Maharaj goes, then the entire spiritual world has to accompany him and go with him as well. Because Guru Maharaj represents the spiritual world. He is our bona fide representative of Krishna. And he lives and speaks and breathes Krishna. He is fully Krishna conscious. And for us to be Krishna conscious, we just need to be Guru conscious. प्रभु जी बहुत ही उच्च विचार या गहरा विचार या भाव व्यक्त कर रहे हैं कि अगर हमें भक्ति करनी है, कृष्ण भावना भावित होना है, तो हमें उसके लिए केवल गुरु महाराज जी को नजदीक से देखना है या गुरु महाराज जी को ऑब्जर्व करना है, गुरु महाराज जी के कार्यकलापों को देखते रहना है बस। ये गुरु महाराज जी पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस और प्रभुपाद कॉन्शियस है। तो एक दिन हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, हम आप सभी की जानकारी के लिए यहाँ डरबन में एक फुटबॉल ग्राउंड में गए थे। तो पुनः सौभाग्यवश मैं उस मॉर्निंग वॉक पे था, क्योंकि मेरी यहाँ कुछ और भी सेवाएं थी, कुकिंग वगैरह, तो मैं रोज नहीं जा पाता था। तो उस दिन मैं गया था और सहसा कुछ बात हो रही थी और फुटबॉल ग्राउंड में चल रहे थे। तो पुनः हम तो फुटबॉल ग्राउंड देख रहे थे क्या है कैसा है, लेकिन कुछ बात हो रही थी और गुरु महाराज जी भगवान का वर्णन प्रारंभ कर दिए। गुरु महाराज जी इतनी गहराई में चले गए कि गुरु महाराज जी चलते चलते रुक गए और बोलने लगे कि भगवान के कौन से अंग गहरे हैं, भगवान के कौन से अंग लाल है, भगवान कैसे है। पूरा चरण के नख से मयूर पिच तक पूरा वर्णन किया। और एक प्रकार से ऐसा लग रहा था कि हम वास्तविक रूप में उस फुटबॉल ग्राउंड में कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। पूरा हूबहू गुरु महाराज जी भागवतम का सार लेकर गुरु महाराज जी बता रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार से वर्णन किए हैं। और ऐसा नहीं था कि कुछ भागवत की चर्चा हो रही थी या कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं था, सब जप कर रहे थे, चल रहे थे। जैसे मैंने कहा, मैं फुटबॉल ग्राउंड देख रहा था, अन्य भक्त क्या देख रहे थे, क्या सोच रहे थे पता नहीं, लेकिन गुरु महाराज कृष्ण को देख रहे थे। और सहसा फिर लगभग उस मॉर्निंग वॉक की 15 से 20 मिनट की जो पूरी टॉक है,
वो गुरु महाराज जी ने वर्णन किया कि कृष्ण कैसे है, कैसे दिखते हैं। और फिर गुरु महाराज जी ने अंत में ये भी कहा कि हम केवल भगवान को नहीं जानते, हमें ये भी पता है भगवान कौन है, वो कैसे दिखते हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। ये हर एक जानकारी हमारे पास है, लेकिन दुर्भाग्यवश फिर भी मनुष्य को ये मानने में कठिनाई है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। जो वो करुणा थी गुरु महाराज जी के हृदय में, जो भाव था गुरु महाराज जी का, और साथ ही में जो गुरु महाराज जी का कन्विक्शन था, जो विश्वास था कृष्ण में या प्रभुपाद में या भक्ति में, वो बहुत ही साफ साफ प्रदर्शित हो रहा था। तो प्रभु जी ये कह रहे थे कि प्रभु जी का ये अनुभव रहा है, या प्रभु जी का ये साक्षात्कार रहा है कि गुरु महाराज जी जो है, हम गाते भी है मंगल आरती में, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, जो गुरु महाराज जी है वो हमारा एक सीधा संबंध है भगवान से, या एक प्रकार से एक शिष्य के लिए गुरु एक साक्षात हरि के समान ही है। उनका उनका दर्शन और उनकी जानकारी या उनकी उनकी डिटेल्स देते हैं। तो बहुत ही सुंदर पॉइंट का है प्रभु जी के, जब जब गुरु महाराज आते हैं या गुरु महाराज जहाँ भी जाते हैं या आध्यात्मिक गुरु जहाँ भी जाते हैं, वो स्थान धाम बन जाता है, क्योंकि हमेशा गुरु के हृदय में कृष्ण रहते हैं, और जहाँ कृष्ण जाते हैं वो धाम है, वो ब्रज बन जाता है, वो गोलोक बन जाता है। और जहाँ पर उस समय जब जब गुरु महाराज जहाँ जहाँ रहते हैं, तो उस समय जो जो भक्त उनके साथ होते हैं, वे एक प्रकार से सभी गोलोक पहुंच जाते हैं या धाम पहुंच जाते हैं गुरु महाराज जी की प्रेजेंस में। लेकिन शोक या दुख की बात यह है कि जब गुरु महाराज वहां से अन्य स्थान पे जाते हैं, तो धाम भी वहां से अन्य स्थान पर जाता है, क्योंकि धाम गुरु महाराज को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि गुरु महाराज कभी भी कृष्ण को नहीं छोड़ते। यस प्रभु। Yeah, so in closing, I'd just like to make one request, that if each one of us can adjust our lives a little bit to go back to a simpler, purer way of life, then we will see the global effect of it. There's a saying, you take care of the small problems and the bigger problems will take care of themselves. And we know the famous saying by Mahatma Gandhi, where he says that be the change you want to see. So for us to see a change in this global village, all we need to do is start by changing ourselves. And by changing ourselves, we address the small problems, and the big problem will take care of itself. And if we can do that, it will be pleasing to Guru Maharaj, and the effect will be felt all the way up globally, and we can, to a point, to a percentage, claim back the lost village, the village life, the village concept that we have lost. And if we can get that back, then we can come back, we can bring back simple living and higher thinking. तो प्रभु जी अंत में हम सभी से यही कहना चाह रहे हैं कि हम किस प्रकार से गुरु महाराज जी की ये जो ग्रंथ लेखन है उसमें हम किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, गुरु महाराज जी की का जो शोक है, जो चिंता है, उससे गुरु महाराज जी को कैसे मुक्त कर सकते हैं। तो प्रभु जी कह रहे हैं, अंग्रेजी में एक कहावत चलती है कि बड़ी बड़ी दिक्कतों को सुलझाने की आवश्यकता नहीं है, उससे पहले जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, छोटी छोटी बातें हैं, अगर उस पर ही ध्यान दे देंगे तो बड़ी बात है, बड़े जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। और फिर महात्मा गांधी जी ने जो कहा है, बी द चेंज यू वांट टू सी, कि अगर आप जो बदलाव इस संसार में देखना चाहते हैं, पहले आप स्वयं बदल जाइए। या जो बदलाव, या ये बहुत ही गहरा विचार है कि हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हम प्राय ये सोचते हैं ये भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी हमें यही सिखाए, श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी हमें यही सिखाए कि अगर हम किसी में कोई चेंज देखना चाहते हैं तो हमारा अनर्थ है या हमारा ही कमतरता है, तो पहले हमें स्वयं सुधर अगर हम जाएंगे या हम में वो परिवर्तन ला देंगे, तो अपने आप हर एक बात ठीक हो जाएगी या हर एक कार्य ठीक हो जाएगा। तो उसी विचार से प्रभु जी कह रहे हैं कि जो गुरु महाराज जी की का शौक है कि संसार में क्या हो रहा है या बहुत ही ज्यादा शहरीकरण हो रहा है, तो सीधा सीधा इसका एक उपाय है कि हम ये पूरे संसार को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने आप को जरूर रोक सकते हैं। तो अगर तुरंत ही हम सादा जीवन उच्च विचार को हमारे जीवन में व्यवहारिकता से उतार लेंगे या व्यवहारिक रूप से हम उसका पालन करेंगे हमारे निजी जीवन में, तो वो एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाएगी इस पूरे संसार को बदलने के लिए
जो हमारे गुरु महाराज जी की ग्लानि है या गुरु महाराज जी का शोक है, तो इस प्रकार से हम गुरु महाराज जी की भाव से भी हम कर सकते हैं. Mother, you want to add something? Yes, I just wanted to say, to put it very simply, Gurudev said a very amazing thing, and that was that you can live in the city and your consciousness can be that of a villager, and you will be living the simple living, high thinking life. You can live in the village and your consciousness might be that of a city dweller, and then you will not be living the simple living, high thinking life. So it's a concept of consciousness. It doesn't matter that you have to be in a village to be living simply. You can be where you are and you can live simply. And if you amend your consciousness properly and perfectly, then we can achieve the simple living, high thinking way of life. माता जी सारांश में कह रहे हैं, गुरु महाराज जी का वाक्य दोहरा रहे. गुरु महाराज जी ये जो हमें अभी प्रभु जी कहे, कृष्ण बलदेव प्रभु हमसे आग्रह किए कि हम किस प्रकार से इस आंदोलन में एक रूप से सक्रिय हो सकते हैं, तो ये है कि हमें अपना जीवन थोड़ा परिवर्तित करना है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग हमें करना है. तो माता जी उस पॉइंट पे भी गुरु महाराज जी ने जो सॉल्यूशन दिया है वो कह रहे हैं कि गुरु महाराज जी ये कहे हैं कि भले हम कहीं भी हो, चाहे हम भारत में हो या कहीं और विदेश में हो, या हम कहीं भी भले शहर में भी क्यों ना रहते हो, हम वहां जहाँ रह रहे वहीं हम रह सकते हैं. ऐसा नहीं कि इस टॉक के बाद हम सभी को गांव जाना है. गुरु महाराज जी ये कह रहे हैं कि हम जहाँ रह रहे वहीं स्थित होकर हमारी जो चेतना है, हमारी मानसिकता है, वो हमें एक ग्रामीण व्यक्ति की तरह बनानी है जो सादा जीवन जीता है और उसके विचार उच्च होते हैं. तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये नहीं कि हमें अपना घर छोड़ के हमें कहीं जाना है या हमें गांव में जाके रहना है. अगर हम हमारी मानसिकता में सही रूप से स्थित नहीं है तो शायद हो सकता है गांव में जाकर भी उसे शहर बना देंगे, जो आप सभी देख ही रहे हैं आजकल के गांव में जो हो रहा है. लेकिन यदि आप विदेश में भी रहेंगे और अगर आप सादा जीवन उच्च विचार के भाव में स्थित है, तो आप विदेश में रहकर भी ग्रामीण जीवन जिएंगे, और अगर इस भावना में स्थित नहीं है तो आप गांव में रहकर भी विदेशीकरण की ओर आप प्रभावित रहेंगे. तो गुरु महाराज जी का एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है इस पे कि हमें हमारी चेतना या हमें हमारी मानसिकता को बदलना है. हम जहां भी रह रहे हैं हमें सादा जीवन उच्च विचार हमारे जीवन में या हमारी मानसिकता में, हमारी आदतों में पूर्ण रूप से उसे हमें धारण करना है. सो बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं विशेष रूप से हमारे भक्तों का जो इतना समय हो गया फिर भी बने रहे. अभी धन्यवाद देकर रुकने का मन तो नहीं कर रहा है, जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा. व्यक्तिगत रूप से मेरा यह भाव बन रहा है कि और हम इस विषय पे सुने, चर्चा करें, लेकिन आपके सभी के प्रभु जी ने जो प्रारंभ में ही मिलिट्री डिसिप्लिन की बात की, तो एक प्रकार से let me put it in English. So I'm just thanking them, Krishna Baldev Prabhu and Mataji, and I'm expressing our gratitude, and I'm personally expressing my dissatisfaction to stop this session at this point, or to conclude this session. Like personally, as I expressed a minute before, I want more of this nectar from all of you. But then I'm just trying to say that in the beginning itself, you talked about military discipline, where time is considered as a very important factor, and we are already crossing it. So I'm also asking apologies from all the assembled devotees and expressing my gratitude and expressing our sincere thanks for all of them to be with us, even we stretched a bit. तो सभी भक्तों का पुनः हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, और काफी अभी रिपोर्टिंग बचा है. अभी तो गुरु महाराज जी श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज शिष्यों से मिलने गए थे, वो हम कुछ नहीं कह पाए. और गुरु महाराज जी ने वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल में किस प्रकार से एक बात है, मेरा इतने वर्षों में एक मेरा अनुभव रहा है, या एक मेरा साक्षात्कार है, या एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हमारे गुरु महाराज जी की संकल्प शक्ति बहुत ही दृढ़ है. यदि गुरु महाराज जी ने कुछ कहा या कुछ कहे कि ये होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, तो स्वयं कृष्ण उसे पूर्ण करते हैं. ये मेरा निजी अनुभव है, कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है. तो I was just telling them that how Guru Maharaj's determination is so strong. He's so firm on his determination. If he desires something, I have observed in all these years, Krishna himself comes and he has to get it done. He has to make sure it happens. Be it be
the kirtan in that hall where we went, and everything was a big mess in the beginning, but what turned out to be was a big success. तो हम तो काफी अभी चीजें कहनी बाकी है, लेकिन संक्षिप्त में मैं लास्ट एक I would just like narrate observation I had last night when we were driving back from Joburg to our place. तो आप सभी से बस एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा और फिर हम इस सत्र को फाइनली विराम देंगे। आप सब जो वाक्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो विराम वाला वाक्य अभी कुछ ही मिनटों में मैं बोलने वाला हूँ। तो कल की एक बात है, कल का हमारा दिन 2:30 बजे प्रारंभ हुआ। गुरुमा जी उठे, बोत्सवाना में सब आप सभी के साथ जब किया टॉक। कल तो अतुल कृष्ण प्रभु दिए थे, लेकिन ये ना सोचे कि गुरुमा जी जब टॉक नहीं देते हैं तो विश्राम ही करते हैं। अभी भी गुरुमा जी बगल के रूम में जब ही कर रहे हैं, उनकी आवाज अभी भी, इनकी ध्वनि मैं सुन पा रहा हूँ। तो कल का दिवस काफी लंबा था। फिर 10 बजे रथ यात्रा के लिए निकले और अफ्रीका की धूप, आप सोच सकते हैं, नहीं मैं ये कहूंगा हम नहीं सोच सकते अफ्रीका की धूप क्या है। जब भक्त हमें कह रहे थे कि प्रभु जी यहाँ बहुत गर्मी और धूप होती है, टेम्परेचर तो भले 38 डिग्री के आसपास, मैं सोचा हमें तो आदत है, भारत में तो इससे ज्यादा होता है, लेकिन जब वो धूप में हम चले तो पता चला कि अफ्रीका की धूप क्या है। तो उस धूप में चले, गुरुमा जी प्रसाद वितरण कर रहे थे। अच्छा, और एक बात क्षमा कीजिए, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। जब प्रसाद वितरण कर रहे थे, आप सभी ने देखा होगा भारत में गुरुमा रथ यात्रा में रथ पे बैठ के प्रसाद बांटते हैं, राइट? हम फेंकते भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये कल्चर नहीं है। तो एक आधा घंटा गुरुमाज बैठ के प्रसाद वितरण कर रहे थे रथ में। फिर गुरुमाज मुझे बोले पद्माली, लोग प्रसाद के पास नहीं आ रहे, केवल इतना कहे। मुझे लगा कि उसका मतलब ये है कि थोड़ा लोगों को भेजते रहो। तो लोग साइड में जो लोग चल रहे थे उनको किसी भी तरह हम प्रभावित कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आके प्रसाद ले, वो भी गुरुमाज जी के हाथ से। तो फिर मैंने देखा एक जगह पर उसके 5-7 मिनट बाद रथ रुक गया और गुरुमाज जी नीचे उतरे और फिर तेजी से चलना प्रारंभ किया। और फिर मुझे कहे, लोग प्रसाद तक नहीं पहुंच रहे तो प्रसाद को लोगों तक पहुंचाते हैं, चलो। और बहुत ही, तो गुरुमा जी तो कहे तो फल और मिठाइयों के वजन वाले हैवी बास्केट्स उठाए 2-3 भक्तों ने, और गुरुमा जी रथ से डबल तेजी से आगे बढ़ के सभी जीवों को प्रसाद दे रहे थे, जगन्नाथ की कृपा प्रदान कर रहे थे। तो एक और ऐड कर दिया। फिर कल हम वो करके तुरंत प्रसाद लेकर फिर 4 बजे हम लोग निकल गए, हमारा फ्लाइट था। तो जब हम यहाँ जोहान्सबर्ग वापस पहुंचे और हमें एक भक्त कुलशेखर प्रभु गाड़ी चला के हमें हमारे निवास स्थान पर ला रहे थे जहाँ हमें रहना था। I hope you both are relating with this Hindi. Is it okay? Because then they would understand more quickly our other participants in Hindi. So जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो गुरुमा जी ने मुझे कहा, गिव मी माई लैपटॉप। गुरुमा जी ने कहा मेरा लैपटॉप दो, और जी कुछ। तो हम जब यहाँ से गए थे तो मुझे कहा था कृष्ण केशव प्रभु ने कि एयरपोर्ट से घर ज्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट दूर होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे मैंने मेरी कुबुद्धि चलाई। कहते गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करी ऐक्य। तो गुरुमा जी ने कहा लैपटॉप दो, तो मुझे देना चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़ा और होकर मैंने कहा गुरुमा जी केवल 10 मिनट की दूरी है, लैपटॉप निकाले। गुरुमा जी कहे, फिर गुरुमाज कुछ नहीं कहे। मैं बोला बस अभी पहुंच ही जाएंगे। गुरुमाज बोले हाँ जो भी है लैपटॉप दे दो। तो फिर मैंने दिया लैपटॉप। हम एयरपोर्ट से निकले, 45 मिनट तक हम चलते रहे और हम हमारे निवास स्थान पर नहीं पहुंचे थे। आधे घंटे बाद क्या पता चला, अभी तो मजे की बात अभी है हम चल रहे थे गाड़ी से, तो कुलशेखर प्रभु गाड़ी चला रहे थे और उनके आगे एक और गाड़ी चल रही थी। तो उन्होंने ये सोच लिया कि इसमें कृष्ण केशव प्रभु बैठे हैं जो रास्ता दिखा रहे हैं। तो आधा घंटा हम गलत रास्ते पे चलते रहे और फिर वो गाड़ी जहाँ उसे मुड़ना था मुड़ गई। तो कुलशेखर प्रभु ने कहा, ओ आई थॉट दैट वाज कृष्ण केशव। तो तब पता चला कि वो हम किसी गलत गाड़ी के पीछे चल रहे थे और फिर यू टर्न लेके वापस हम हमारे गंतव्य स्थान तक आए। तब मुझे पता चला कि वास्तव में गुरु महाराज क्या है। एक मेरा तुच्छ छोटा सा एक मेरा अनुभव या साक्षात्कार रहा, लेकिन इमीडिएटली मुझे रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, आई मीन गुरु महाराज है हमारे बीच, लेकिन हमारे बीच एक प्रकार से नहीं रहते हैं। ही इज स्ट्रेट अवे कनेक्टेड टू कृष्णा एंड टाइम। गुरु महाराज जानते हैं
हमारा कुछ दिनों पहले हमने कहा था गुरु महाराज जी त्रिकालदर्शी है, वे हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों जानते हैं। तो जो गुरु महाराज जी के स्वर में जो कन्विक्शन था, हाँ जो भी है, अगर 10 मिनट होती तो गुरु महाराज नहीं मांगते, जो मेरा अनुभव रहा है। गुरु महाराज कहते नहीं ठीक है, लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा कि जो भी है दे दो। तब जब हम 45 मिनट बाद हम हमारे स्थान पर पहुंचे तो मुझे महसूस हुआ कि वो 10 मिनट क्या थी। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो विशेष रूप से हम प्रभु जी और माता जी का आभार व्यक्त करने से पहले गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी ने आज ये संधि एक रूप से प्रदान की जहाँ पर हम गुरु महाराज जी के निजी जीवन को या दिनचर्या को आप सभी के साथ शेयर कर पाए। तो काफी प्योरीफाइंग एक्सपीरियंस रहा है ये आज का सेशन, वन ऑफ माय फेवरेट सेशंस, बिकॉज गुरु महाराज जी के विषय में हम जो इतनी चर्चा कर पाए। और विशेष रूप से हम श्रीमान कृष्ण बलदेव प्रभु और दीनानुकंपा माता जी का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने और समय में भी और इतने शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किया और हम सभी को ये जो गुरु महाराज जी का साउथ अफ्रीकन ट्रिप रहा उसके विषय में अवगत करवाया। तो इसी प्रकार से मॉरिशस के भी भक्त है जो सोच रहे होंगे कि अरे मॉरिशस में भी तो इतनी लीलाएं हुई है। तो उसके लिए आप सभी की प्रसन्नता के लिए या जानकारी के लिए गुरु महाराज जी जब मॉरिशस में थे तो गुरु महाराज जी ने मॉरिशस के भक्तों को एक प्रकार से एक आदेश, इंस्ट्रक्शन दे ही दिया है कि गुरु महाराज जी का जो मॉरिशस दौरा रहा है इतने वर्षों में, इतने सालों में, उसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा जाए। हरि बोल। तो हम जो नहीं थे या हम जब नहीं थे तब से गुरु महाराज जी मॉरिशस जा रहे और गुरु महाराज जी कह रहे थे कि मैंने व्यक्तिगत रूप से इस मॉरिशस को बदलते हुए देखा है इतने वर्षों में। तो वो सारी लीलाएं भी हम तक पहुंचेगी। तो हम नहीं समझ सकते गुरु महाराज जी का भाव क्या है, गुरु महाराज जी किस विचार से चलते हैं, किस गहराई से गुरु महाराज जी अपना प्रत्येक दिवस, अपना प्रत्येक क्षण व्यतीत करते हैं। तो सभी भक्तों से अनुरोध है एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण हम श्रीमान कृष्ण बलदेव प्रभु दीनानुकंपा माता जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार पुनः हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम गुरु महाराज जी के चरणों में हमारा आभार व्यक्त करते हैं और श्रील प्रभुपाद और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी को दीर्घ आयुष्य, स्वस्थ आयुष्य दे और इसी प्रकार से वे हम सभी का और असंख्य बद्ध जीवों का उद्धार कर पाए या करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। और हम जाए उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है जो गुरु महाराज कहे कि बताओ सभी भक्तों को। तो जितने दिन से हम यहाँ पर थे साउथ अफ्रीका में, गुरु महाराज जी 2 जूम सेशन कर रहे थे। एक भारत के समय के अनुसार 2:30 बजे उठ के 2:30 से 4, और फिर पुनः साउथ अफ्रीका के समय के अनुसार साउथ अफ्रीका के 2:30 से 4, और फिर पुनः 5:30 से 6:30। तो भारत में लगभग 9 बजते हैं उस समय पे। तो गुरु महाराज जी कहे हैं कि आज अंतिम सत्र है उन जूम सेशन, क्योंकि कल तो हम सुबह 7 बजे यहाँ से निकलेंगे और 28 तारीख को सुबह 3 बजे लगभग 22 घंटों के प्रवास के बाद गुरु महाराज जी पुनः भारत पहुंचेंगे। और I'll just add a bit, कल मैं यहाँ पर बोत्सवाना एयरपोर्ट पे गुरु महाराज से पूछ रहा था आगे फिर 1-2 दिन थोड़ा विश्राम लेके आगे जाएंगे। तो गुरु महाराज कहे we could drive straight away to Pune and Pandharpur। तो जैसे भारत पहुंच के गुरु महाराज जी कहे, मैं कह रहा था कि एक दिन थोड़ा रुक जाएंगे, कहीं विश्राम करेंगे, थोड़ा इतने दिनों बाद आ रहे हैं। तो गुरु महाराज जी कहे हाँ कर सकते हैं, लेकिन पंढरपुर पहुंच के। तो आप देखिए क्या किस तेजी से बढ़े। इसलिए प्राय हम कहते हैं गुरु महाराज इज अनस्टॉपेबल। उन्हें इस भौतिक जगत की कोई भी अवस्था, कोई भी स्थिति गुरु महाराज जी को नहीं रोक सकती उनके प्रिय श्रील प्रभुपाद की सेवाओं में कार्यरत रहने से। तो जी गुरु महाराज जी का कहना है कि 5:30 बजे अभी जो सेशन होने वाला है लगभग 1 घंटे में ही, यहाँ पर 4:40 हो रही है अभी, तो लगभग 1 घंटे में दूसरा सेशन होगा जहाँ व्यक्तिगत रूप से आप गुरु महाराज जी को मिल सकते हैं, देख सकते हैं, उनके साथ जप करके आज का जो
कोटा था जहाँ गुरु महाराज जी का संग नहीं प्राप्त हुआ, तो वो पूरा हो सकता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि 9 बजे जो दूसरा सेशन होने वाला है उसमें ज्वाइन कीजिए और गुरु महाराज जी का संग सानिध्य प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. Ram Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna. Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna 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 Krishna Ram Ram Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare.
Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasati Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna. Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Ram Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Sivasi Gaur Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare.
Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna Krishna Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna Krishna Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, 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 Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare
Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare. Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare. Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare. Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare. Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare. Hare Krishna. Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare. Hare Ram, Hare. Sri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gaur Bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare. Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Ratnamala. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya I did say Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I did the right thing. However, I'm not reciting Bhagavatam. Sound is low, someone is low. Sound okay? Yeah? No? Yes? Low? Is it getting better? Hare Krishna, Hare Hare. Yes? Thumbs up or down or? Okay. All right. Good. So, why should I say that? I haven't said that. But I was going to say that. And I will say that.
That is, I don't like to, but I think I have to say that. And that is, that this one is this, that, this one is going to be last session, Zoom session. Okay, I said it. So I'll say more about that towards the end. And in the meantime, or before that, I will say this and that. Hari Hari, Jai Jagannath. Jagannath Rath Yatra Mahotsava, which we conducted yesterday. Or ISKCON Botswana. Botswana is one of the African nations, small. The geographically is quite good size. The population-wise, it has 2.5 million people there. So that's double the size of Mauritius, population-wise. Twice as many. It's the size of not even Nagpur. What city? Baroda. The population of Baroda. Those many people in an entire nation, Botswana. Hari Hari. I also said that yesterday as I was addressing the assembled people there. Or you're seeing, you are being shown something there. Huh? You have some Rath Yatra? Yeah, you could show something, some crowd. Yeah, I had said a small country and big gathering. I mean, there were some 400 guests we had. So that's considered big. Sri Krishna Janmashtami, Noida, we had 400,000 visitors. So I was pleased, and everyone was kind of also impressed with the gathering. And we had a good Rath Yatra. Good kirtans and good prasad distribution. I distributed prasad. Rath Yatra without prasad distribution, what is that Rath Yatra? Because I also had said, which is a fact, that Jagannath Puri and Jagannath is known for Jagannath Prasad. Jagannath ka bhat, Jagat pasare haath. So we distributed lots of prasad.
And I don't know, maybe there are some. And at the end of the procession, there were 400 in procession, but 1,000 took prasad. When it's time for prasad, from nowhere, they take avatar. Hari Hari. Yeah, so you could see me also distributing prasad. Hari Hari. And you see Jagannath. Huh? Where is the procession? Yeah, you see Jagannath. You see Jagannath Arati. Hari Hari. I see there the gathering. Ram Govind Maharaj also in attendance. Hari Hari. Jai Jagannath. I also said, I think I did say that we conduct such Rath Yatras, some locals you see, happily accepting, honoring prasadam. You're not seeing here. Those are offline here. They're not seeing what I'm showing. They go with you there. Yeah, the crowd was quite enthusiastic and chanting and dancing. Sweeping. The commissioner, High Commissioner, the ambassador of India also was there. And he did sweeping the streets. At least he was there at the beginning. That's him. He's same with a hat. He's from Prayagraj. I was very happy that he had a Bharatiya uniform, Indian outfit, dhoti and kurta and a special hat. Okay, so that's not what I wanted to say, but that also. Seeing is believing, so seeing is believing, they say. So I was saying some things, but then I thought I should also show you so that you would believe me. But our philosophy is hearing is believing. Not seeing is believing. Because you don't see the Lord. So how do we believe that He exists or He is there? Here.
Hearing is believing. Hari Hari, sadhus, shastras, acharyas say so, so it must exist. Hari Hari. Of course, Lord is kind and He appears in the form of the deities so that we could also see Him. Hari Hari. So, so there's a lot to know about the Lord, and that all that we need to know is also made known to us through the sadhus, shastras, and acharyas. Hari Hari. And those shastras are, of course, Bhagavad Gita is that shastra or that science. Ekam shastram devaki putra gitam. One scripture is enough. Which one? Devaki putra gitam. Geet, song, sung by Devaki Putra, son of Devaki. Son of Devaki is Krishna, and his song is Bhagavad Gita. So that kind of scripture. Of course, Gita and Bhagavatam also, these Vedic literatures are, in fact, are the complete and perfect scriptures. And they describe all that is we included. Hari. But we need help of acharyas to understand the purports of those scriptures, or understand those scriptures as they are. When it is said, Acharyavan Purusho Veda. Acharyavan Purusha Veda. One who has acharya, one who has acharya. That Purusha, then that person, the person who has acharya, person who has accepted acharya in his life, which person will or is competent to realize? One who has acharya, one who has accepted acharya in his life. Acharya, or guru, well, in parampara,
Siksha Guru, Diksha Gurus, those have accepted their authority in Parampara. They will get to know Lord fully, properly, as Lord is, as Bhagavad Gita as it is, Bhagavad Gita as it is, or even Bhagavatam as it is. Yeah, we get to know with the help of devotees, acharyas, gurus. Hari Hari. So, a lot of people of this world are God conscious, but not Krishna conscious. Think about it. Or I would like you to think about everything that I'm talking here. Think about it. Because that's why Srila Prabhupada, while doing the foundation of the internationals, well, I'm not saying of his movement, of his society, then he wanted the name of the society as International Society for what? Krishna consciousness. There was a proposal. Why not we call God conscious International Society for God Consciousness? Prabhupada refused. No. Because when people say God, God knows what they think. When they think of God, God is a very vague idea. God. Who knows? I am God. That also. I could make you a God. Or Sai Baba is a God. Or one time someone was Swami. Today's Swami becomes tomorrow's Narayan. Swami Narayan. Says, anyway, I'm also thinking like this because yesterday as we were, our procession was greeted at different Hindu temples or Hindu organizations. The whole world of Hinduism is also there in that little country, Botswana. Hari Hari. And there are some Christian Prabhus around, Christian Prabhus. And of course there's a big mosque in Gaborone. So they're also God conscious. Christians are God conscious, Muslims are God conscious, Swami Narayans are God conscious. Yes, so many parties in India. I'm talking of the Hindus also. There are called Arya Samaj, and no, I should not name them. Hari Hari. So they are God conscious, but they are not Krishna conscious.
So Krishna has finally said if they care to hear Lord and take him seriously, Krishna, Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanam Raj. Give up all varieties of religion, give up all varieties of God consciousness, and do what? Surrender unto me and become Krishna conscious. Hari Hari. And if you did that, and aham tvam sarvapapebhyo mokshishami ma suchaha, I'll make you free from all the sins, all the actions of the sins that you have committed. You will be liberated, and then you will come back to me, back to Godhead. So I wanted to say this, including, I should have already said this, we call the Mayavadis. Mayavadis are Mayavadi Krishna Paradi. Mayavadis are what? Krishna Paradi. Can you say that? Bharat Krishna? Mayavadi Krishna Paradi. They are offenders of Krishna. They offend Krishna. Because they don't know Krishna as he is. They just see some light, Brahma Jyoti, and they get some Ananda, Brahmananda, and they think this is all in all, this is everything. But that is not the fact. So will Mayavadis go back to Godhead? Of course not. I mean, they don't care. They don't care either of going back to God. A lot of these parties, they have no clue of some place called back to home, or home. There's a home, and the whole kingdom, the spiritual kingdom of the Lord. They say something, kingdom of the Lord. I'm not sure whether they are talking of heaven. I don't know the difference between heaven and Vaikuntha. The Indians, Hindus also a lot of times do not distinguish. They don't know difference between Swarga and Vaikuntha, or heaven and Vaikuntha or Golok. Yeah, a lot of them think going to heaven is perfection. This is it. We made it. So, well, we could also say that the bhukti kami, mukti kami, siddhi kami, sakale ashant, Krishna bhakta nishkam, ataiva shant. So these are different parties, or different kinds of practitioners of religion. Some is a bhukti party, and there's a mukti party,
and Siddhi party. And I think all the parties, they belong to one of these categories or parties. Whether they're Hindus or they're Muslims or they're Christians or Mayavadis, you name it. All parties should be belonging to either Bhukti party, Mukti party, Siddhi party. And the other party is Krishna Bhakta party. So basically there are four kinds of parties. All religious people belong to one of these four parties. Three are of one kind, and the Krishna Bhaktas are yet another kind. So the party that we call Mayavadis, also Advaitavadis, Advaita, Mayavad, Advaitavad, Nirakarvad, Nirgunvad. No sound. Oh, no sound. For how long this is going on? And you're quiet. Are you hearing? Sound? Yes, sound? No sound? Sound is There very is no sound, good. Gurudev. Everyone else says there is sound. And you're the only one. We feel sorry for you. Hari Hari. Okay, Sriji Radha. All the way from Virar, huh? She's hearing sound. And you are in South Africa, very close. I Not can hear hearing the now. sound. I can hear now. I can hear now. Good news. Yeah, so Hari Hari. So our Muslim brothers, you go to the mosque and they're praying. Who knows who are they praying to? There is no deity, no form. Because their belief, unfortunately, is that God has no form. This is Nirakar. There's no qualities. Okay, if he has a no form, no qualities, then will he play some pastimes? Person with no form, could he perform any activities? Yes or no? It's not a difficult question. Yeah. So no pastimes. So he's not performing any pastimes. He doesn't need any place. There's no abode. He doesn't land anywhere, or doesn't walk or dance or whatever, sit. He doesn't. He's just a Brahman. He's just a light. And if he has no form, he does not perform any leelas, no pastimes. Pastimes are performed
There has to be Lord and another devotee, right? They're dealing. Then there's activity, there's reciprocation, there are pastimes. So for all these Mayavadis, and India is full of Mayavadis, but I'm just trying to make you understand, most of the religions are like that. They have given another name. No, we are Muslims. But you are Mayavadi. You are Advaitavadi. So for them, there's no question of going back to Godhead. We are going. Okay, you may go. They may say. But we just like to be. We like to be. Aham Brahmasmi. That's it. Aham Brahma Asmi. I think I had been explaining this. I am Brahma. Aham Brahmasmi. This is Mayavad. And this is what everyone else, lots of Mayavadis, Indian Hindu Mayavadis are Western or they're spread all over the world. This is Mayavad. They may have different names. Oh, we are this religion, that religion, but it has origin in Hinduism. Hinduism further, more and more denomination. One denomination of Hinduism is Islam. It's another denomination. And Christianity is the same thing. Doing lots anyway. Doing lots of welfare activities, feeding the poor or opening the hospitals and schools and this and that. Christianity means social welfare. And in India or amongst the Hindus or Hindu organizations, that's all that they do. Social welfare. Hari Hari. So will they go back to God, to Krishna? That's the trouble. They will have a God realization. But what God would they realize? They would realize God as Brahma and become Brahmasmi, Brahma realized. That's why, anyway, in India, when these big so-called Mahatmas, when they depart, then they say, such and such Mahatma, Brahmaleen, Mahamandaleshwar, Brahmaleen, such and such Brahmaleen. You know what Brahmaleen means? Merge. He merged into Brahman. He merged into Brahman, Brahmaleen. And of course, this goes on in India. Some other pious people die, well, they may be even impious. Then after their departure, death, they frame a big photograph of that person and they write a caption, such and such Swargavasi. It's very common in India. Swargavasi such and such.
Means this person has gone to Swarga. Some may write also Kailash Vasi. If it was Shankar, Bholenath, Bhakta, Kailash Vasi. Or such and such Swarga Vasi. And some part is Brahmaleen, merge into Brahman. But we rarely get to hear or read these people writing of Vaikunthavasi, very rare. Some Mahatma, Sudurlabha. Vaikunthavasi or Golokavasi. No, he went back to Vaikunt. As Sant Tukaram Maharaj ki, he went to Vaikunt. Plane, aircraft, Vaikuntha Viman had come to his hometown, village, outside Pune, as he was busy chanting the holy names of the Lord. And he was praying, Lord, please bring me back, please bring me back. I want to come back to you. Lord heard the prayer, and the Viman was dispatched for Dehu, and Tukaram Maharaj, he boarded the plane and tightened his belt, seat belt. And while leaving, he said, Amijato Amuchagava, Amusa Rama Rama Khyava, I am going back to home, back to Vaikunt. He said that. Thousands witnessing as he departed for Vaikunt. Hari Hari. So, that's why we, as we pray our pranam mantra of Srila Prabhupada is Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatharine. We offer our obeisances unto Srila Prabhupada at his lotus feet. We offer our pranam. What kind of Srila Prabhupada? He did Gauravani Prachar. He shared the message of Gauranga, holy names, shared Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. He shared Gita, Bhagavad, and like that. And then that resulted in what? Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatharine. People of the Western world and gradually whole world, Srila Prabhupada protected them, saved them. Saved them from what? Nirvishesh Vad Shunyavad. Nirvishesh meaning Advaitavad, Nirakarvad, or Brahmavad, Mayavad. There are different names for same Vad or same kind of ism. Impersonalism. Impersonalism. So most of these God concepts, just a God concept, people are impersonalists. Well, or they are also voidist.
the big population of this world are Buddhist, right? Of course, Christianity is not leading the world. Britishers propagated Christianity all over as they were colonizing colonies here, colony there, colony everywhere. They became emperors of the world. And one of the contribution of them is they delivered Christianity. They gave Christianity as a gift to people, converted people, very converted Hindus also converted. Christianity is number one, Muslims are number two, number wise. Hindus are only, I think, the 14%. 33% population of the world is Christians. 25% of the population, one-fourth of the total population are Muslims. 15% are Hindus, and some 7-8% are Buddhists. Hari. And amongst those 15% Hindus, there are some are bhukti kamis, some mukti kamis, some siddhi kamis. And all these parties are followers of these different religions. They don't go back to Krishna. They don't know Krishna. They think they know God. But if you don't know Krishna as his name, then you don't know God. Don't know fully. If you don't know Vrindavan, up there also, that you don't know God enough, or the God's qualities and God's pastimes and all that you do not know. So all these different religionists, including Hindus, and I was just saying, these are just different denominations of Hinduism. Christianity is just, some Hindus are like Christians, or some Christians are like Hindus. Some Muslims are like Hindus, Mayavadis, and some Mayavadis are like Muslims. And lots of people do social welfare workers, social fair work, so like Christians are. So to them, Lord has said in Bhagavad Gita, Bahunam janmanam ante jnanavan mam prapadyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlavaha. And after many lifetime after lifetime after lifetime, you are Christian so many lifetimes, Muslim so many lifetimes, Buddhist maybe so many lifetimes, and then what possibly could happen is you will
you will become jnanavan. You will become jnanavan. One who possesses jnana is called jnanavan. Jnanavan. Knowledgeable. You will become knowledgeable, and knowing what you become knowledgeable, Krishna has said, Vasudeva sarvam iti. If you get to know or understand now that Vasudeva is all in all, Vasudeva sarvam iti, this much, then Vasudeva sarvam iti samahatma sudurlabha. That kind of Mahatma, that kind of Atma, now he has become Mahatma because he knows Vasudeva is all in all. So the Hare Krishna devotees, Gaudiya Vaishnavas, and of course there are other Vaishnava Paramparas are there. 4 Vaishnava Paramparas. Vaishnava Parampara. Ramanujacharya, Madhvacharya, Vishnu Swami, and Nimbarkacharya. They were acharyas. They were, and their parampara is there. So you get to know Lord through this parampara. Evam parampara praptam yamam rajarshayo viduhu. So Krishna has declared. So these paramparas, this is arrangement of the Lord. These 4 paramparas are authorized, and they are authority. And of course, the Gaudiya line, we are connected with Madhvacharya, or we branched off with Madhvendra Puri became our Pratham or founder Acharya, and then Ishwar Puri and Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and 6 Goswamis of Vrindavan and Vishwanath Chakravarti Thakur and like that, Bhaktivinoda Thakur and like that. So if one receives knowledge in these 4 paramparas, especially, Gaudiya, Vaishnava Parampara, then you get to know Acharyavan Purusho Veda, right? In the very beginning I said that. Acharyavan Purusha Veda. If you are Acharyavan, you belong, Acharya, you belong to authorized Acharya. You come in the line of authorized Acharya. Then Jnanavan, the Purusha Veda. Acharyavan Purusha. Then you get to know everything about the Lord, complete and knowledge as it is. Sampradaya vihinaye mantraste vifala mataha. There is also your caution. Take precaution. What is that? Sampradaya vihina e mantraste vifala mata. But if you receive knowledge outside these paramparas or sampradayas, then vifala, fruitless, useless. You will not get to know Krishna. You will get to know something about God, and you will think, I'm God conscious, but you will not become Krishna conscious or Ram conscious.
structure, a Narasimha conscious, or Vaman Dev conscious, Hari. So, anyway, I'm trying to get some points across to you. And yeah, that point also is Samahatma Sudurlabaha. Such person is very, very rare. One who takes to Krishna consciousness or receives knowledge in parampara, Samahatma Sudurlabha. That person is very, very rare. And so those rare personalities, you all are being met or by kind Lord Krishna, or especially Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Brahmana Brahmite Koan Bhagyavan Ji Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. So Lord has connected us with this Gaudiya Vaishnava Parampara. As a result, we are getting to know Vasudeva is all in all, Krishna is all in all, Krishna is supreme personality of Godhead. Huh? Yeah, Srila Prabhupada rarely called God God. He only called God Krishna because he knew who is God. And he knew he has a name, many names. The supreme name is Krishna. And he has a personality. Or first of all, supreme is a supreme. Krishna is a supreme personality, and he has personality. He is a person. He is a person. Try to understand. He is a person. As soon as you say somebody is a person, then what? Immediately he has a name. He has a form. Then he's a person. He has so many qualities. He's a person. He has address. He is a person. He has a phone number also. And Srila Prabhupada used to say, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, is a phone number of God. It has 16 digits. Huh? Does anyone in the world, when these big presidents and prime ministers, anyone has phone number with 16 digits? No way. Must be God's phone number. And as soon as you say person, he has relationships. He is surrounded by so many other persons. The Srila Prabhupada made it clear to declare to the whole world that Krishna
His personality and His supreme personality of Godhead, and He always talked of going back to home, back to Godhead, going back to home. No one else seemed to be talking this mantra or talking of going back to home. Do you know anyone talking of going back to home? Why would they? As I already explained, they want to be God. Aham Brahmasmi. I want to be. I just want to be God. Or something like that. Or I want God to serve me. Oh God, give us our daily bread. So they want to use God for those purposes. Oh God, give us, give this, give that, give that. As if Lord is what? Your order supplier. You order and He supplies. If He's not going to be supplying, then I don't need God. So that's the only purpose of having God in our life, because He supplies. Sukha sampatti ghar aave, kashta mite tanaka. Jaya Jagadish Hare. The Hindus offer arati and they say, oh God, Sukha sampatti ghar aave. Let all the happiness and sampatti, the wealth, as if they have kept the doors and windows open while doing arati. Throw, God, throw some wealth through the windows and doors at me or into my house. Is He doing that? So this whole thing on their mind is Sukha Sampatti Ghara Ave. They need God only for this purpose. If He's going to be a supplier, then yes. Those, I don't know, in Germany or during the Second World War, all the ladies were praying, let our husbands return safe. Husbands or maybe or brothers. But as that did not happen, they got killed, and they became godless. Those who were praying, bring our husbands back. What kind of God He is? He's not fulfilling our desires or orders. He's not becoming our order supplier. Who needs God? That kind of God. So they gave up being God conscious or forgot God altogether. So this is not Krishna consciousness. This is maybe some kind of God consciousness, but not Krishna consciousness. So really, all right. So I think you're getting different messages, right? So any question, comments you have, you could say so.
I mean, I also, this is the last session we have. Sorry about that. But I also wanted to, from the very first day, know that how are you, how you are doing. So some of you did say, but not many of you. So if you also want to say how you are doing, anyway, if you have any questions regarding that, you're welcome to say so. And I could only say that I don't know, maybe almost. I think after I arrived in South Africa some 20 days ago or so, we started this get together with you all, devotees, disciples, followers, friends from this part of the world, or this South Africa time zone, SAST, extended to Europe and Russia and like that, So so I enjoyed talking to you, seeing you and talking to you. Which is my duty. So having fulfilled those duties, my obligations, I was feeling satisfied. However, this is becoming the last. Oh, there are many hands up before I conclude my presentation. Is still on. It'll take another minute. So, so I'm also, as I said before, thinking how in some shape or form we could continue this. As I said yesterday, occasionally or some kind of periodically, once a month, or on every Ekadasi, that is twice a month, or every Sunday, that's 4 times a month. So I don't know, I'm just wondering what we could do or how we could continue and what is practical for me and you all. So this is something to think about and settle. Something should go on. I think you probably would not mind or would like to have something like that. Okay, so floor is open for discussion or comments, questions, discussion. All right.
Dinanatampai could do some coordination here. Oh, Hare Krishna. Hands are already up. Hare Krishna. I'm from Budapest, and I would like to say we were on Saturday in two towns, the Padayatra take in Debrecen and in Nyíregyháza, and we give Goranga biscuit and many Srimad Bhagavatam and magazine distribution, and today I will have predications group in my room, in my flat, and we will sing and take so sweets for Govardhan Lal, but we have a program on next Sunday in Krishna Valley, and I am very happy with your program on the last 2 weeks, and I thank you a lot for your Guru Maharaj. Yeah. Hare Krishna, Guru Maharaj. I'm really grateful to you, for arranging this opportunity for us to chant with you. It was really great, it was really great for us, experiencing this thing. And like every day we are enthusiastic, like, okay, we have to chant with Guru Maharaj. Okay, let's go now. And yeah, I want to share one more thing. On Saturday in Nairobi, we went for Harinam with almost like 40 to 45 devotees. And I want to share one experience that, there was one African boy. So I was telling him to chant. So he was chanting, he was learning like 2-3 times. And like, we went to downtown actually. So he was chanting, then he was really experiencing. So after a few minutes, we just went to another place. So he was still there, he was chanting, he was dancing. So I was like, okay. Then I thought he'll go from there. Then again, we reached temple and he was still there and he ate prashadam also. So, and he was talking to all the youth, HKTC boys over here. And I don't know, he must be joining soon. So yeah, I wanted to share that. Thank you very much. Next. Hare Krishna, Guru Maharaj. Who is this? This is Kausalya from Belgium. You hear me? Yeah. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you so much for this opportunity. It has been really inspiring for me. I'm kind of okay. My health is not good. This is like a chronicle thing. I'm not in touch with devotees also. There's some long-term conflict has been there. But I'm okay. I'm chanting at home. And with Mangal Artik on Mayapur TV. And my Nita is still under my care. He's a bit of troublesome, with also weak health and autism. It's not so easy, but we're managing. Frankly, I was preparing to go live in the forest. This is like a long-term planning, very long-term planning.
but I'm kind of preparing this with a friend because ultimately I think this might be very interesting to attract a certain group of young people. It doesn't have a fixed shape in my mind, but I see some opportunities there, and it's very much in nature, in line with my nature, I think, with my desire also, and I think there is some kind of preaching in my style or something, but it's very long term. But slowly but surely, kind of things start to take shape a bit. All the while, I'm just, I have a little contribution to my World Holy Name Festival. It's very small, but I have been knitting a hat for Prabhupada's murti of some devotee friends and also a cheddar. And this much I can do. I'm like a squirrel. Hare Krishna Guru Maharaj. Thank you very much for this inspiring session. Hare Krishna. Dandavat Pranam Guru Maharaj. I am telling in Hindi because I have much words in English. Less. I can speak less. गुरु महाराज बहुत अच्छा था, आप इतने दिन से हमारे साथ थे, हम लोगों को भी भारत के लोगों को जैसा अवसर मिल पाया और बहुत ज्यादा प्रेरणादायक था। आप हमारे साथ रोज बात करते थे और इंस्पायर करते थे और हमने 100 से अधिक लोगों को हरे कृष्ण मंत्र का जप कराया इन दिनों 7 दिनों में और कीर्तन कराया सबके घरों में जा जाकर, केवल आपकी प्रेरणा की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Hare Krishna Guru Maharaj, please accept our obeisances, all glories to Srila Prabhupada, glories to you. Thank you very much for this nice program we were able to attend. And actually, after Vyasa Puja, we were meditated upon the 50 years anniversary, which is going to be in Govardhan this year, the Govardhan Yatra Festival, the 50 years anniversary from your first initiation received from Srila Prabhupada. And we were meditating, and it was closer and closer than Padayatra was. So we were fully in Padayatra. So, and then really, when we received the information that it's going to be the registrations, so we applied. So we are very happy that we will continue if with your blessing we will be able to reach Vrindavan. We will come to this retreat. So we are happy that just after the registration, also we received the information that now you will be in our time zone and we will be able to reach these nice japa sessions. So it's like we are very fortunate that we can be like another 1 week with you in a nearby, I mean in near time. So we are looking forward to come to the holy Dham, Vrindavan Dham, and to stay 1 week with your holiness there. You're welcome. You're welcome. Guru Maharaj, please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. After a very successful Ratha Yatra in Croatia, where we distribute in 2 hours around 240 books, Prabhupada Jivan will go now back to Hungarian and continue his duty. Hare Krishna Guru Maharaj, Hare Krishna dear devotees. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, I really want to express my happiness and, because you are giving these wonderful speeches for us, these Japa talks. These Japa talks gives really a new life for me. I really, under the effects of your speeches and your presence, it's an amazing experience. And thank you so much for doing it. Yeah, the Rath Yatra were here in Croatia. It was amazing.
and everybody danced in ecstasy, you know, and that was our fortune. One sannyasi from my country, Hungary, Bhaktipad Goswami Maharaj, were here, and I mentioned for the local devotees this, and they just said, let's invite him. And there were many, you know, disturbance. He cannot come in time, you know, he late, and at the last, we can say like 20-25 minutes, he just arrived, but he started to lead the last kirtan. It was really ecstatic, you know. I really felt we went back to Vrindavan. It was a very good experience. And now today I'm go back to Hungary, and we are preparing for Govardhan Puja, because in this year we are doing it earlier, as Tulsi Krishna Mataji mentioned. We are preparing with sweets for Govardhan Lal. And just one last thing, I really, as I expressed, I really under the effect of your presence, and it just came in my mind some weeks ago. I really want to take part this Golden Jubilee Parikram with you, and I asked permission from my temple authorities, and they let me know to go there. And I hope if you give me your blessings and I get the blessings of Shri Radha Thakurani, I can be there with you 1 month in Kartik. This is my desire. Thank you, Guru Maharaj. Thank you so much. Very well. See you there. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. I just want to thank you, Guru Maharaj, for conducting this second Japa session. I used to join the first session since after a few days from the outset. But then, since I got my new posting, I have so much work to do that I go to sleep really late at night. I have to work, so it became a bit difficult for me to join the first Japa session. And I was really missing the Japa talks and chanting with you. And this second Japa talk gave me the opportunity to join again. And I really enjoy listening to you, Maharaj. It was very inspiring. I just want to thank you a lot for your mercy, Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept our most humble obeisances. We would like to express our gratitude, and we are very happy that you came into our house and into our hearts also. And we are also planning to go to Vrindavan this October, so please bless us to go there, because it's not easy to go to Vrindavan. So we hope we will meet you there and we will have your darshan again. And I would like to also thank to all the devotees who make this session, this Japa talks possible. So I am very obliged. Thank you very much. Hare Krishna. Hare. Your daughter wants to say something. She's coming to Vrindavan. Vrindavan. Yes. Okay. Hare Krishna. We are running to school, so thank you very much. Okay. Hare Krishna. There you go. Good. Hare Krishna, dear Lokanath Swami Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Thank you very much for the sessions that you are doing in English. It's Edwin from Radhadash speaking. So thank you very much. I enjoyed the classes. I enjoyed the Japa, chanting together. Thank you for your association. So, Hare Krishna. Yeah. Viva. Jai Guru Maharaj, please accept my most humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. I cannot thank you enough, Guru Maharaj, for this wonderful and very enlightening Japa sessions you allowed us to have here from the Westerners. And it's an eye-opening, it's incredibly deep relation now. I always was going by Vani, but now it's like Bapu is opening, and it was very enlightening for me.
I thank you from my heart. We had a Harinam on Saturday in Pforzheim and distributed 40 books and 1,150 sweets. Hare Krishna, Guru Maharaj. I don't see you on the screen, but you are in my heart. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Mataji. Krishna Namadan Prabhu, please go ahead. Hare Krishna, Gurudev. My respect, obeisance to you. Thank you for everything. I don't understand why do many people want something from Krishna. Krishna, he is just interesting. Thank you for leading us to Krishna. Indulekha Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, Hare Krishna, dear devotees, dear Guru Maharaj. We have awakened Sankirtan every Saturday. We distribute Srila Prabhupada's books. By your grace, I try to participate in each one. Harinams are also held on Saturday. By your grace, I also try to participate. Thank you for this wonderful Japa session. I'm very grateful to you. Sorry for the very bad English. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you. Haribol. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Nikita Prabhu, please go ahead. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, all devotees. Please accept my humble obeisances. Thank you, Guru Maharaj, for this topic. I think it's very important for understanding, and we spoke about it on Saturday on our Namahata. We read the book of Srila Bhaktivinoda Thakur, Shiharinam Chidamani, and fourth offers of the holy names is minimizing authority of the Vedic scriptures. We read about it, and Bhaktivinoda Thakur said about Mayavada also of these philosophies, and I think it's very important. Thank you very much. Thank you very much also for these special sessions. It's very important for Russian and Ukrainian devotees, European, and we had also the Russian translation for thanks to Mataji Mehriban from Azerbaijan. Thank you, Guru Maharaj, and thank you all devotees. Hare Krishna. And Saturday we also showed we watched a movie of the Saint Tukaram film in our Vaishnava community. We had a small cinema and we watched this film. Hare Krishna. Yeah. Last but not least, Smriti Devi. Yes, yeah. Go ahead, Mataji. हरे कृष्णा गुरु महाराज, सभी भक्तों के चरणों में मेरे सादर प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज, आपकी कृपा से हमने अपने परिवार के घर में कीर्तन सत्संग किए और जो पड़ोसी भी हैं हम कर गए थे सत्संग करने के लिए। हमें बहुत आनंद मिला और हमें इच्छा है और
बहुत उत्साह हुई कि अब हम सोच रहे हैं कि हम माला और छोटा सा जो बुक है हम वितरण करेंगे और आपकी कृपा हमें कृपा दे भगवान गुरुदेव की और सेवा करे और हम प्रचार करते रहे आपकी हम कृपा दे गुरुदेव। हरे कृष्णा। There's a Mataji from Pune, Gurudev. Yeah, go ahead. Namrata. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Maharaj, yesterday there was a youth festival here in Pune. His Holiness Sundar Chaitanya Swami Maharaj was here, and we had about 2,000 youth coming in here at Pune, and there was a lot of book distribution and pravachan by His Grace Amog Leela Prabhu was given here. So yesterday there was a good youth festival which was organized here in the evening at Pune, Guru Maharaj. So yes, wanted to share this, and a lot of youth had come and participated here in Nam Maharaj. Yeah. Thank you, Maharaj. Thank you. Please bless Maharaj for your association in Kartik and Vrindavan, Maharaj. Thank you for these special association classes. Yeah, see you there. Yes, Maharaj. Thank you. And now? And now where has Gurudev gone? Oh, okay, great. Thank you. Thank you, Gurudev, for coming back. I think no more hands. Gurudev, want to call on anyone, or shall we end the session? Okay, here's one more hand that's come up. And Dr. Nikhil Prabhuji. Unmute yourself, please, Prabhu. Yeah. Hare Krishna, Guru Maharaj. One question that now today is the first day of Navratri. So how to correlate with this means we should pray for Radharani, or how to correlate with our way, means how we can sync this festival with Krishna. Thank you. Yeah. Yes, he's Radharani of this world. Oh, serious. Radharani becomes Durga in this world. In fact, Yogamaya is predicted by the Lord. Yogamaya will appear as a Krishna Anuja. Yashoda gave birth to Krishna, and Yogamaya. And then Yogamaya ended up, well, Vasudeva took her to Mathura. Kamsa had attempted to kill this baby. She slipped out of his hands. Your killer is somewhere else born, or well, anyway, in Bhagavatam, 10th canto, chapter 2, I think, Krishna has talked that you, Yogamaya, you will
will appear in some 12 different forms, or I think some form number is mentioned. And he will be known as Madhavi and Ishani and this and that. So she is in charge of Uncle Durga. She is superintendent of the jail. And yeah, those who go against Krishna, she punishes them with birth, death, old age, disease. These are all arrangements of Durga Devi. Chaeva yasya bhuvanani vibharti Durga. Ichha anurupam yasya cheshtate sa. Brahma has glorified Durga, saying that Durga is a chaya, shadow. Chayeva yasya bhuvanani vibharti Durga. She appears as Durga, as a chaya, shadow of Lord, and she is maintaining this world. And Ichha anurupam api yasya cheshtate sa. All the chestas, all chesta means endeavors of Durga are as per will of the Lord. She is just executing the will of the Lord. She is not independent, doesn't act independently. She just acts on behalf of the Lord, executing the will of the Lord. Of course, her task is not like that of Radharani in the spiritual sky. She has to do this kind of jobs of punishing those who are against the Lord. Hari Hari. So it's good to understand the Siddhant, or philosophically her position in relationship with the Lord. So she is not against. There's one. It's Krishna and Durga. Durga is against Krishna. No, Krishna. Yeah, Durga is playing her role on behalf of the Lord here. And then she had appeared in Mayapur. Well, I mean, of course, this Shiva and Parvati, they are Vaishnava and Vaishnavi. Vaishnavana Metha Shambhu. The topmost Vaishnava is Shiva, and the topmost Vaishnavi is also Parvati. And they always spend time in recitation of Bhagavatam. Really. So that's Durga for us. And worshipping Radharani, we worship Durga along with, we don't separately worship her. But we certainly
we cannot and we do not offend Durga. Hare Hare. Hare Krishna. Wind up, Madhavi. Okay. Hare Krishna, dear devotees. Jai Panchali Mataji, Achyuta Chetna Mataji. I think the session has gone on quite some time now. And I want to, I think on behalf of all of us, there's no words that can thank Gurudev for being so merciful and conducting this second session, especially in English. So, dear Gurudev, thank you so very much from the bottom of our hearts. We are eternally indebted and eternally grateful. Then the other thing also, thank you so much, dear Vaishnavas and Vaishnavis, for taking time out of your day and joining the second session. It is highly appreciated by all of us who are on the other side trying to serve you. You make service to yourselves so easy and so wonderful and so blissful that it makes us very happy to be able to do this little bit just for you. So with Guru Gauranga's mercy, hopefully these sessions will manifest in the future in some shape or form. Let's hope and desire for that. And I do not know when I will see you again or when I will speak with you again. So please accept my most humble obeisances. Do take good care. And I hope I will see you real soon. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhasya kripa sindhubhaya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnavinda ki jai, Shila Prabhupada ki jai, Shila Gurudev ki jai. Hare Krishna.